हाँ तो वैसे देखा जाए तो चलो गाइस हम आ गए हैं मुंह उठा के। एंड मुंह उठा के पता नहीं कब तक आ पाएंगे। देखते हैं और कुछ करते हैं। हम आने जहाँ उसको जहाँ। चलो थोड़ी सी हम गेम खेल लेते हैं। मैं इतने दिनों से लाइव नहीं आ रहा था और आगे ही बताइए हम लोग के नहीं। कभी कभी हम आते रहेंगे, आएंगे हो जाएंगे, सबको बुलाएंगे। फालतू फालतू वो सब। मैं जरा बाकी चीज़ें भी कर लूँ। नाइट बाट, नाइट बाट। तुमको मौका लगाना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहा है? रिमूव मार्क बार। ओके, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। तू क्या कह रहा था? तो गेम चली क्यों नहीं वो? तो बोलना कि खराब हुई। चल जानी चाहिए थी, चाहिए थी। ये चला के देख लेते हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकता। लाइक FPS गेम जिसमें पिंग ज़्यादा चाहिए। दैट्स व्हाई हम ऑफलाइन गेम खेलेंगे। जाओ है, ले लो चालू। बड़ा टाइम लगा दिया। इसी को स्लो गए कह सकते हैं सब। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, माय गॉड। इतनी ज़्यादा एफपी ये कैसे आ रही है भाई? नेट की स्पीड इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे होगी नेट की? अभी ये फ्लक्चुएट होती है। गेम भी नेट लेती है, गेम ही नेट ले रही है। गेम चलाते ही इसका नेट का ऐसी तैसी फिट जाती है, अनस्टेबल हो जाता है। ये कर लो भाई तुम पहले। कर लूँगा पहले, एक कुछ नेट स्टेबल हो जाए। यस अब हो गया स्टेबल। ये तो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए थी वाली, क्या कहते हैं, नेट से चलने के लिए। नो सेव गेम मजाक चल रहा है क्या? ऐप से इरेज। हाँ अभी प्रोग्रेस इतनी करी और इरेज। भाई ये स्टेबल रहना ऐसे क्यों ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है? एक जगह टिक के चल। कोई नहीं कह रहा ऊपर होने के लिए, बस एक जगह टिक के चल। नीचे नीचे तो बिल्कुल नहीं होना, ऊपर भले हो जाए। कंटिन्यू। और मेरा इतने दिनों से मन कर रहा था मैं इसे कंटिन्यू करूँ। मैंने सोचा स्ट्रीम पे ही करेंगे। वेपन अपग्रेडेड। वेपन तो अपने वही है पुराने, तलवार एंड वो सिरिंज है जिससे हम ड्रिंक करते हैं ब्लड को। गन वन चलाने का कोई मजा वजा भी नहीं है, गन तो ऐसे ही है नल्ली बुल्ली। तो इसलिए हम क्लोज रेंज, बेसिकली वैम्पायर है तो क्लोज रेंज ही अटैक होंगे हमारे। कुछ एबिलिटीज़ है तो अलग अलग ये आ गए। प्रीस लगता है एक तरीके से देखा जाए तो, बट इन दी एंड है तो वैम्पायर। वैम्पायर मेरे पास एक्सपी बहुत हो गई है, दैट्स मीन मैं कुछ नए कांड कर सकते हैं हम। मैप में देखा जाए तो कहाँ जाने पे मेन कुछ तो मुझे पता है, वो सब तो हम जानते वानते हैं। थोड़ा नीचे, अच्छा ऐसे होगा ना नीचे। ओ भाई सब कितना बड़ा मैप है। अनजूम भी नहीं होता क्या? जूम इन और अनजूम करना है भाई मुझे। एंड अभी यहाँ भी हम सर्च कर सकते हैं आई थिंक। जो जो रेड रेड जगह हैं वो सर्च कर सकते हैं। भी ये वाली जगह एंड ये वाली जगह। यहाँ पैसे क्या कर रहे हैं? अच्छा मर्चेंट है ना यहाँ, तो पैसे तो होंगे ही। मैं जरा पहले इस पे जाएंगे हाइड आउट पे, उसके बाद जाएंगे इधर मेन को। इस पे पहले हाइड आउट पे चलते हैं। मैप देना चाहिए भाई नहीं मानता, मेरी यादाश्त तेज है। तब तक ये नहीं है कि तुम मैप नहीं दोगे भाई। यहाँ तो कुछ था। अच्छा ये चमक रहे हैं ना पोस्टर्स।
बेटा मैंने तो गलत जगह हूँ क्या? हाँ गलत जगह हूँ। अल्ले वो ऊपर है वो आने की नहीं यहाँ क्या कर रही है? खड़ा है भाई क्या आवाज़ आ रही है? जी हाँ मादरा ठीक है नीचे आइटम हो सकते ठीक है ना मैंने लिए तो थे जितना मुझे याद है पिछली बार आया था। बेटा अटैक कर रहा है जो सब हो रहा। ओ भाई साहब ओ भैंस की गोली मार दी। हेलो डार्क एम्बर वेलकम टू दिस वैम्पायर की स्पेलिंग गलत है। नहीं नहीं वो सही है। गेम की स्पेलिंग ये है। I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I am a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. ज़्यादा चढ़ा नहीं हो रहा। इसको है क्या वैसे बीमारी है देखे जरा। Do you need assistance? अरे नहीं मेरे को पहले वो देखना था। पहले वो देखते हैं। इसको हार्ट की और मेरा मेडिसिन भी है। नाइस। दे देते हैं फिर इसे ये मेडिसिन। There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. येलो हमारी मेडिसिन चलेगी। The man you were looking for is dead. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. तो चॉइस वाली गेम है कह सकते हो। मतलब मेरे डिसीजन से बहुत कुछ इफेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने किसी को वैम्पायर हूँ तो ब्लड पी लिया तो वो स्टोरी से लाइन से हट जाएगा बट जो दूसरा कैरेक्टर उस पर डिपेंड होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। स्टोरी मतलब चेंज हो जाती है। वो वाला सीन है कह सकते हो चॉइस वाली है। एंड This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to face the risk. You all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Okay, investigation successed. एक मिनट इसका ही है क्या मेंटल स्टेट? हाँ लेवल 1 नहीं लग रहा मेरे से शक होएगा। पहले मैं देख लेता हूँ। मैं इसका कुछ ट्रीवरी नहीं देख सकता क्या? हाइड लॉक हाँ ये दोनों मैं एक बार कर दूँ ना उसके बाद इसे कंज्यूम भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तब तक पता नहीं लगेगा क्या सीन है। जरा देखिए इन्वेस्टिगेशन पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाइड है सारे पर्सनल क्वेश्चन दैट मीन अभी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं थोड़ी बहुत। If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. If she's pretty, I'll keep an eye out. क्या मेरा नेट स्लो चल रहा है? क्योंकि मेरा नहीं है मैं अपने नेट से नहीं चला रहा हूँ दैट्स वाई। अरे भाई साहब कभी कभी तो नेट एकदम हाई पे पहुँच जाता है और कभी एकदम लो पे चला जाता है। स्टेबल नहीं है मेन प्रॉब्लम तो ये है सबसे बड़ी। भाई इतना अनस्टेबल है इतना क्यों आ रहा है बे? अरे भाई साहब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं बस स्ट्रीम स्टेबल चले तो कोई बात नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ स्ट्रीम स्टेबल चल भी रही है क्या? ये नल्लो वाली हरकत अभी भी चालू है। तररम टम 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 तररम टम 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 टम। एक बार को जरा देख लेते हैं स्ट्रीम स्टेबल है क्या नहीं। आई थिंक क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी भी ठीक ही है। खोल के रखता हूँ मैं साथ में तो मुझे पता भी लगता रहेगा। अब ठीक है। एंड अब पता लगेगा मुझे कि स्ट्रीम स्टेबल है क्या नहीं। पर्सनल क्वेश्चन तो अभी मैं पूछ नहीं सकता। इसे मेडिसिन मैंने दे चुका हूँ एंड इसे कंज्यूम भी कर सकता हूँ बट मैं अभी करूँगा नहीं क्योंकि स्टोरी में इफेक्ट पड़ जाएगा। ये मर गया तो मुझे दूसरे का नहीं पता लगेगा जो अभी कनेक्ट है इससे तो इसलिए अभी थोड़ा इसे सर्वाइव करने देते हैं जीने देते हैं।
उसके बाद अपना वैम्पायर वाला असली रूप दिखाएंगे। बेसिकली हम वैम्पायर जब बन चुके हैं। Did you steal that man medication? What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Okay. अब ये चॉइस है, इनमें से क्या पूछूं? Maybe you are confusing with someone else. What did we do? ये बात तो है। हाँ, ये हो सकता है दिलासा दिया जाए या इतना एग्जॉस्ट क्यों ये पूछा जाए। टारगेट डोंट यू एन इजी टारगेट क्या करें? पहले आराम से थोड़ी कन्वर्सेशन चलने देते हैं। Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. ये लो जी, आ गया Perhaps you कौन could का। help me. I said sod off. Go find yourself another guide. ओके, ज़्यादा रोड नहीं हो रहा, लग रहा है मेरे हाथों से मरेगा ये। What happened? Hey, All right. sod off. It's true. I said हाँ, ये अब मेरा चॉइस होगी ना, मैंने क्या चूज़ करा। हम इसको थोड़ा सा जिंदा रहने देते हैं, उसके बाद हम me. नेक्स्ट पे आएंगे। Someday you'll understand. ओके, Wasted your life or what? देखते हैं क्या सीन है What? बंदे का। Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? यस, Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. ओके, I'm तो क्यों कर रहा Benjamin था फिर? Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. देखा जरा इसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, पहले ये देखे जरा। ब्रेन वाला, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं ब्लड का हूँ तो हार्ट वगैरह डिसीज में कर सकता हूँ, बट ब्रेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, चल भाई यहाँ से। तो मैं ब्रेन का तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं है तेरे लिए। एंड तो हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इसकी तो हमें मिल चुकी है, ऐसे रिकवरिंग हो रही है। इसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट इसकी ब्लड की क्वालिटी एकदम टट्टी है, तो इसको पहले ये देना पड़ेगा। धीरे धीरे इसमें भी पहले इसके क्वेश्चंस मैं देखना चाहूँगा। लुकिंग फॉर द नर्स डॉक्टर कह Do रहे you हैं। know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? हाँ, मैं उसको देखता Have you हूँ। heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. ओके, ये क्या सीन चल रहा है, हमें मिल रहा है भाई साहब। ले लूँ क्या चले बेटे में? Tell me about this place. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Have you no family? You mean you used to have a better life? तेरी You family don't नहीं have है। anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. ओके, इसकी family You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Paytm। हाँ, ये लल्ला है बेचारा, कल्ला कल्ला है। Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. ओके, सन भी नल्ला निकला भाई। Tell me about the war. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. I'm just a very vehicle method. You should not feel ahead. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. अरे भाई साहब, एक खर बंदे की इसके इंफॉर्मेशन आ रही है भाई।
Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. That's Oh, right, I भाई didn't साहब। want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. ओके, यहाँ तो कुछ गड़बड़ी चल रही है भाई साहब। A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye. बाय फॉर नाउ। बेटा ध्यान रख, मेरे जैसे यहाँ घूम रहे हैं अभी, छोड़ रहा हूँ तेरे को। अभी मूड बदला तो बचिएगा नहीं फिर मेरे से तो। बस कुछ चंद की तेरी जिंदगी है। ये कौन सी जगह है? ये कुछ बाइक करने की जरूरत नहीं है वैसे नहीं। ये कहाँ गया भाई? ये कुछ नहीं है। एंड मुझे जाना किधर है उसे? कहाँ जाना? वहाँ एक बंदा लेटा हुआ है, उसको भी देख लेते क्या सीन है उसका। बस ओके, जाते एक रिंग विंग मिल गई। अब लगेगा यहाँ। I cannot enter. ओके नहीं, एंटर नहीं कर सकता। मुझे लगा मैं गजब चीज़ ढूंढने वाला। इन दी एंड वो नल्ला ही रह जाता है। बेसिकली जगह है कैसी? अरे भाई साहब, मेरे को ज़्यादा ही जल्दी मिलेगा ना, तो थोड़ा आराम से चलते हैं। पेशेंस रख के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ओ ये This elixir will give you faith again. ओके। Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, आई I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? डॉक्टर से ये कह रही I है। hear about it during my studies. I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. लेट्स रेड। ओ माय गॉड, इसे भी लपेटे में ले सकता हूँ। दैट्स मी। ठीक है जरा, लेवल 3 चाहिए भाई सब इसके लिए। एंड इसको कोई बीमारी नहीं है, एचपी बहुत ज़्यादा है, इसे लपेटे में लेना पड़ेगा। ट्रेड I'd में like to देखिए see पहले what इसके kind पास of क्या है। medicine you're selling. ओके मस्ट गो। कोई ऐसा कुछ आइटम मुझे देखने पड़ेंगे। इसको मैं सेल करना चाहूँगा, 20 कॉइन में सेल हो जाएगा। हाँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट यहाँ कुछ है भाई, बहुत सारे आइटम्स है। इसका करूँगा क्या मैं? पता नहीं क्या काम आते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं इन चीज़ का। आई थिंक आइटम्स बन जाए। जाओ बताओ, इससे कभी फिर आके ट्रेड करेंगे। Good evening. अभी क्वेश्चन वगैरह। आई एम लुकिंग फॉर। Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Okay, scam. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the local? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Okay, यहाँ कैसी समय? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Oh, ये कुछ अनोखा।
यहाँ कोई बंदा है जिसके बारे में पता लगा सकते हैं। टकलू है, टकलू अननोन है। ये कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस पर्सन निकल गए। क्रिएटर के नाम पर मिस्टीरियस। Goodbye, Miss Swanborough. इसको तो पर्सनल Perhaps क्वेश्चन we'll नहीं talk हो again. सकता। ओके। When science fails you, this elixir will give you faith again. इसे मन कर रहा है बेटे मैं ले लूँ। इलेक्जर कर रही है, साइंस फेल इलेक्जर भी तो साइंस। ये कौन है? पिक कर मेरे क्या क्या। ओके ये कुछ नहीं। You can upgrade your weapon using workbench which are available in the every hideout. वो तो चलो ठीक है। मेरी गेम लोड क्यों नहीं हो रही? गेम वो क्यों नहीं हो रही? हो रही है। ओके हम यहाँ कहीं आ गए हैं किसी घर में। खंडर वाले खंडर घर में पहुँच चुके हैं। यहाँ एक लाश दिख रही है बस मुझे पड़ गई, और कुछ तो नहीं दिख रहा। यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ लाश जरूर है। यहाँ लाश से कुछ आइटम्स मिल गए हैं। सेम चीज़ दे रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। उठा लिए, पैसे वैसे मिल गए। आई थिंक यहाँ फाइट कर सकती है। कैसे भाई बंदे लिटा रखे हैं यहाँ? किधर आ हाइड आउट मिल गया अभी। गलत जगह पे हाइड आउट है, गलत बात। अब लुक दूंगा भाई साहब। ये रहा हमारा है ये रही बाहर जाने की जगह। ओह ओ मेरे पास 2-3 जगह है बे। नाइस। कहाँ ये जरा देखे क्या क्या बना सकते हैं। मेरे ख़त्म हो गए बे सारे, और मैं ये बहुत सारा बना सकता हूँ। 3 4 5 बहुत है। ओ मैं ये भी बना सकता हूँ। गोल्ड पर किसी काम का नहीं है अभी। कौन सा काम आता है वैसे? इसको देख के बनाऊंगा। आपको भी पता नहीं आते कि नहीं। रेसिपी अननोन। यूज इट टू क्योर अ सिक ड्यूरिंग अ डायलॉग। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट व्हाटएवर। मैं लंग्स की कुछ कर सकता हूँ एंड हार्ट का कर सकता हूँ। डिसीज में क्योर लाइट ब्लड लगा सीरम। और कुछ है क्या यहाँ? बेसिकली मैं वेपन के लिए ये यूज़ करता हूँ, तो इसको अपग्रेड करना चाहूँगा। बट आगे कुछ नहीं तो अपग्रेड के लिए कुछ है नहीं। इसको तो मैं ऑलरेडी अपग्रेड कर चुका हूँ। इसे कर देते हैं। लेवल आगे नहीं बढ़ा सकते कैसे? गलत बात है यार। मस्त आइटम कर सकता हूँ और आगे कर देते हैं। ओके मैंने ऊपर कर दिया ना शायद इस वजह से। इसको करूँगा तो मेरा 15 हो जाएगा स्टैमिना कंजम्पशन। इसको लेते स्टैमिना बढ़ गया भाई। अब्जॉर्ब 2 पॉइंट। अच्छा ब्लड कंजप्शन भी हो गया नहीं इनके। बहुत बात है। डिक्रीज स्टैमिना कंजप्शन बाय 10%। ब्लड अब्जॉर्प्शन। अभी कुछ नहीं कर सकता। रिसाइकल क्या ये? टेस्टिंग बॉक्स ऑफ पिल फ्लेवर इन सीरियस। ओके 5 5 2 आ जाएगा। लो रिजल्ट
बहुत आइटम है मेरे पास भाई, बहुत सारे आइटम्स होंगे। सोचो इंडिया में मुझे कुछ इनसे कुछ मिल बन रहा हो या समथिंग मिल रहा हो तो यार पता नहीं क्या। ओ भाई सब गिलास है तो देखो, हम एकदम मस्त लगा रहे हैं यहाँ तो। गिलास भाई सब करोगे, इसको मैं बना सकता हूँ बट ये किसी काम का नहीं है अभी। ये शायद में भी काम का हो, इसे यूज ही नहीं करते मेरे को। ये याद नहीं ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला, इनमें से एक है। जब कोई मेरे को मिलेगा ना तो मैं उसको ट्राई करूँगा बनाना। मुझे ये चाहिए। ये दोनों अननोन है रेसिपी सीन की, पैसे वैसे लग जाएंगे, मेरा माल का नहीं लगेगा। मेरा बेड चाहिए, बेड पे बैठो आराम करेंगे। अल्टीमेट शैडो डैमेज, शैडो डैमेज, ब्लड कॉस्ट 0, रिकवरी, रेंज, डैमेज। क्या डैमेज क्या है बे? अल्टीमेट लेना चाहूँगा मैं एक आज, मुझे नहीं पता कौन सी लेनी चाहिए। सबका अलग अलग है देखा जाए तो। यू लॉस कंट्रोल एंड लेट द बीस्ट टेक ओवर for a short time. The beast teleports itself to all enemy around you and takes them with furious blow. Okay. You create a shadow vortex at your target fit coming to life. A shadow interrupts an enemy in the area and inflict random damage. पता नहीं क्या है भाई, कुछ समथिंग अलग ही है। You focus your power to boil your target blood. ओ तेरी भाई सब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। Causing it to violating explode, dealing damage to the target and anything nearby. जब ब्लड मिलेगा ना तो बड़ी वाली चीज़ है। चलो इसे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। मुझे पता है मेरा एक बहुत गंदा जाएगा, इसे ले लेते हैं इनको। एंड अभी लेवल बढ़ाने की बारी आ गई है। ये बढ़ा लेते हैं ब्लड, मेरा होना चाहिए मेरे पास हेल्थ अच्छी खासी। बढ़ा लेते हैं, स्टैमिना भी होना चाहिए भाई, स्टैमिना बहुत कम आता है उसके साथ साथ। एंड यहाँ हम कंगले हो चुके हैं। नाइस, ओ भाई सीरियस हो गया हेल्थ सिचुएशन। मर्चेंट, योर एक्टिंग हैव इम्पैक्ट बाय इकोनॉमी, एक्ट हैज इम्पैक्ट। मैंने क्या कर दिया भाई ऐसा? मैंने करा क्या ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया जिसने? मैंने अभी तक इतना खरीदा वरीदा भी नहीं है। बट ये रहा मर्चेंट, एक इससे मैंने ये करा, इसे ढूंढ रहे हैं हम। डॉक्टर क्रेन इसे शायद ढूंढ रहे हैं। मर्चेंट इसका दिमाग का धी पकड़ा और रखा है। ये हेल्दी है बंदा, जिससे मैंने दवाई दे दी थी ना, रिकवर हो गया आई थिंक। मैंने इनके बारे में कुछ नहीं जानता। इसे कोल्ड है, कोल्ड है ना, इसे भी ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएगा तो मैं दे दूँगा इसे। जैसे मैंने कोई दवाई बनानी थी। कोल्ड की एक वो बना लेते हैं, ये वाला एक मेडिसिन बना लेते हैं। कभी मिल गया वो हम उसे दे देंगे। ये गेट कहाँ की साइड खुलता है मुझे वो देखना है। कहाँ खुलिएगा ये गेट लगे।
हमारे पास अल्टीमेट भी है अब। नाइस। मैं एकदम अच्छी जगह पे निकल चुका हूँ। ये क्या लगा रखा मैंने? इस तो बात होगी जो मैंने लगाया है इधर। ये फालतू में तो मैं लगाने के I can't believe I'm doing this. अभी सोचा मैंने को करना नहीं था, फिर भी हो गया। कचरा वाला आ गया, कचरा अच्छा वो चाचा कर रही है ऊपर। ये रहा हमारी मेन क्विज चल रही है। और यहाँ भी यासिम सेम कोई है? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Goodbye. Goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. कुछ कर सकता हूँ ना, मुझे याद नहीं चला गया। इसको पहले करना नहीं चाहता, बट मुझे ट्रीटमेंट भी करनी पड़ी इस नमूने की, तो मैं मेडिसिन पहले ही बना के रख लेता हूँ। पास में हूँ तो मैं जल्दी मेडिसिन भी बन जाएगी। मुझे पता ही उसे ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। Your health regeneration slowly over time. Okay. कहाँ गया? कहाँ है तू? कहाँ है तू? ये रहा। ये वाला था ना? ये रहा। प्रोजेक्ट। इसको ले भाई। अभी रूड बिहेवियर करो, उसके बाद में उसे मेडिसिन दे रहा हूँ। मेरा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अलग बात है। मैं सबको लपेटे में भी लूँगा साथ के साथ, थोड़ा बस टाइम चाहिए मुझे। तो एक बार सबकी स्टोरी पता लगती रहे ना, उसके बाद सब कंजम्पशन में आ जाएंगे मेरे। फिर कब गायब होंगे पता भी नहीं लगेगा। तो सिटीजन गायब, वो वाला सीन आएगा। Nearby. We distribute flowers at this hour. ये कौन है? पूछो हम ये कर क्या कर रहे हैं? Sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you क्या कर रहा है require बेटा? assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. भाई फिर क्या? ये रहा जिसे देनी है। पहले इसे पर्सनल देखते जरा। ये लपेटे में आएगा लग रहा है, बट इसके बाद बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, तो इसे पहले सीक्रेट्स निकलवाएंगे। उसके बाद ये तो लगता है ही नहीं इसका कोई रिलेशन में, तो इसका मतलब ये मरेगा। I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. Really should thank her someday. ओके, ये तो Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. भाई ये तो थोड़ा रूड बंदा है भाई। It's unusual to see someone so happy around here, वही especially considering the current situation. Why should I be sad now?
There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. लगे I'm item. healthy, and I intend to stay so. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. ओके ये कुछ अलग ही आइटम लग रहा है भाई. Always necessary evil. You're taking advantage of them. You always necessary evil. Advantage. In other of them. words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't Okay, just sir. black and white, you know. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I Yeah, understand, right, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Oh भाई साहब. I am not interested in money. I am disappointed. You are despicable. I don't want such to be associate. I'm not interested in money करते हैं. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. That's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swanborough shit. Okay. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. हाँ भाई कुछ अलग सीन चल रहा है. इसे मैं लपेट में ले सकता हूँ बहुत आराम से. पहले से मेडिसिन लूँ. Since I took an oath to help people, इसे can I मेडिसिन be of देते हैं अभी. assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take Take this. this in case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? A personal question. इसको दिया क्योंकि अभी ये मेरे से खाना बनेगा. अभी रिकवर हो गया है. क्योंकि मैं इसे खाता तो मेरी दिक्कत हो जाती. Personal question पूछते हैं. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. Made me want to puke. You'd better not come back here. Next. I won't be around next time to save you. ये बात भी है. अभी से नेक्स्ट टाइम छोड़ा भी तो ये ख़त्म ही है मेरे ख्याल से. पर्सनल क्वेश्चन इसके पास कोई नहीं रहा. बस कुछ हाइड तो कर रखा है. ये बात है. द ब्लड क्वालिटी ऑफ सिटीजन इज really influencing by their health and the number of hint you gather before embracing him or her. That's mean अभी थोड़ा मैं और कर सकता. नो ब्लड लॉस. आई थिंक इससे हिंट निकलवाना चाहिए. दो तीन और हिंट निकलवाएंगे. इससे थोड़ी एचपी बढ़ेगी. 1 तक पहुंच जाएगी आई थिंक. ऑलमोस्ट 800 तक पहुंच जाए. उसके बाद इसे कंज्यूम करेंगे. अभी इसे थोड़ा छोड़ देते हैं अभी के लिए. बस अभी रिकवरी भी हो रहा है ना. एंड हेल्थ स्टेटस तो यार नीचे क्यों जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. हॉस्पिटल के हिसाब से तो ऊपर ही जाना चाहिए. या तो मैं वही कम कर देता हूँ. सीधी बात है. सबको कम कर देता हूँ. जितने कम जाने उतना ज़्यादा टेक केयर कर पाएंगे. वो भी है. इसके ब्रेन की इलनेस तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इसका कर सकता हूँ कुछ. ये बंदा मिले तो मैं इसकी मेडिसिन बनाई है इसके लिए. ये बंदा पता नहीं क्या है. पजामा घूम रहा है. मुझे कुछ आइडिया नहीं इसका.
इसके साथ भी 2 एसोसिएट हैं, इसको थोड़ा आराम से मारेंगे। इसके साथ कोई नहीं, ऐसे भी कभी भी टपका दो, बट एक बार ये थोड़ा मैं सोच रहा हूँ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले ले इसके बारे में किसी भी तरीके से। इसको क्या है, ये इसको क्या हो रखा है, क्या है तेरे पास? डिसीज, अच्छा ब्रेन वाली है। ब्रेन का तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अभी के लिए, तेरे को छोड़ रहा हूँ। मैं इस तेरे को भी छोड़ रहा हूँ। इन्वेस्टिगेट डायरेक्ट बेंस मिल गया, इसको मैंने अभी रेस्क्यू कर दिया कुछ टाइम के लिए। और कोई नहीं गया बेंस ले ज़रा, उसको मैं टारगेट नहीं कर सकता क्या? I will return later. मुझे मेनू, ओह ये भी इधर ही घूम रहा है, ठीक है बचल रहा है। मैं उसे कुछ कर सकता हूँ बट मेरे पास आइडिया नहीं आ रहा। It's locked, all right. उधर कहीं है भाई कुछ ये कुछ अलग बात है। मैं जा सकता हूँ और कुछ आना पड़ेगा। When science fails you, अरे अच्छा है ना, थोड़ा यहाँ से जाएंगे, थोड़ा यहाँ से। कोई है क्या यहाँ आसपास? तो तेरी ज़्यादा ही घुमा दिया। इतने तो मुझे भी दिख रहा है, मैं भी अंधा हो जाऊँगा। बेसिकली ये लोग रहता है ना, तो यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता। It's locked. One K challenger with 1 video. Welcome to the stream, bro. Nice face. Thank you, bro. कैसे हो? कहाँ था मैं? ये रहा। इधर क्या कर रहे हो तुम? ब्रेन डैमेज है भाई, नल्ला है, इसको कुछ नहीं हो सकता। उसका वैसे भी बुरे हाल ही चल रहे हैं। यही कहीं है, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ। इसको मैं कुछ कर नहीं सकता क्या, जितना मुझे याद है। आई थिंक मैं इसे हिप्नोसिस कर सकता हूँ बट मुझे याद नहीं कैसे, कौन से बटन से हिप्नोसिस होगा वो। कहाँ है, कहाँ गया बे? एक ही डोर है जब से मैं निकाल सकता हूँ। There's nobody here. है बे, वहाँ दिखा था अभी मुझे थोड़ी देर पहले। नोबडी क्या कुछ भी मजाक चल रही है। तो मैप देख के जाता हूँ, घुमाई बहुत तगड़ी है। एंड मैं थोड़ा पीछे आगे जा रही, शुक्र मैं बाहर नहीं गया क्योंकि यहाँ लोग हैं। इन्वेस्टिगेट के लिए तो मुझे दूसरी साइड जाना। I cannot enter. वैम्पायर पावर्स का क्या फायदा भाई, देख रहे हो क्या फायदा भाई उस चीज का। मैं गेट नहीं खोल सकता। There's no one in. लपेटे में लेने का मन कर रहा है इसे। वेट एंड आई थिंक इसको ट्राई करके देखूं। Mr. Bate. टेस्ट तो ये हुआ ना, ले लूँ कैसे लपेटे में? आई थिंक रिलीज कर दूँ, अभी फायदा नहीं है इसको करने का। गया था बेटा, बच गया, अभी छोड़ दिया तुझे। जी ले अभी थोड़ी सी जिंदगी तेरे पास है जो। ये रहा जो मुझे करना है। ओह ये A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? भाई His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. okay। Perhaps just a friend of that
stray poet who is always about? Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? पीछे देखो यहाँ तड़प रहा है इन्हें की बातें चल रही हैं. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. आजा बेटा तेरे को मैं ट्रेन करता हूँ. I must talk. ये भाई इसकी कोल्ड हैं, लॉस ऑफ कोल्ड क्वालिटी, लॉस ऑफ ब्लड क्वालिटी, वैसे कोल्ड क्वालिटी कहते हैं. इसके लिए भी दवाई लेनी पड़ेगी. That journalist or the poet, they must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. अब आ गया ना, अब इससे वापस मिल के आते हैं. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. ओके आई थिंक फिर उसी के पास जा रहे हैं. इसे ट्रेड भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसे बात ही नहीं करने, बात के लिए आगे नहीं आ रहा भाई. बस में मैं इस प्लेस पे जाना है. ये कौन है? Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? दोनों Right, ना. cool, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. हो गया मेरी बारी तुमसे क्वेश्चन आंसर करने की. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Yes. Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. तो ट्रेडर है ये भी. तो ट्रेडर कह रहा मर्चेंडाइज. मर्चेंट. ओ भाई कुछ एक्सपी. Do you need help? अरे यार I ये only करना था. need you to सॉरी. purchase something from my shop, sir. ठीक है तो अब इससे Heard क्यों of a पूछना है? nurse इससे देखा called जाए तो Dorothy? Nurse Crane. she is an excellent nurse. She's just trying to help. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you Thank you so so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. अरे भाई देख ट्रीटमेंट कर रही है, सब कर रही है, उसके बाद भी भाई ये नल्ले ही रहेंगी. इन जैसे तो Right. ऐसे ही होता है भाई, जो Show me what you have. जिंदा नहीं रहता. ओके इस सेल के लिए मेरे पास कुछ है नहीं और मैं करने वाला है. ये वाली मेडिसिन को यार मुझे इस सेल का बेच दो. कुछ तो सिक्के मिलेंगे. हाल में सिक्के हो सकते हैं शायद मेरे पास मल्टीपल. सीधी बात सीधा एक बार में सब सेल करो. हो गया. अरे दूसरा चला गया, दूसरे की बात करनी थी. तो पर्सनल क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते. किसी ने अच्छा How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see.
Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. ओ तेरी ये लो जी एक और की इन्फॉर्मेशन मिल गई एक और पेटे में आने वाला है धीरे-धीरे. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Have been hurt, violent in its face. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Okay, new investigation. Oh yeah. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. एक नई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है लाइफ पल्स. पर्सनल क्वेश्चन नहीं हुआ है. Goodbye for now, Mr. Lewis. That's me and अरे वो दूसरा बंदर कह रहा हूँ बंदा नहीं. That's me हमें बहुत चीजें मिल जाएंगी और पता लगती रहेंगी. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? अरे But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. ये तो बड़ा क्रूर है आदमी. हेल्दी है तभी छोड़ा हो रहा है. Do you enjoy bullying people? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Oh yeah, survival is a natural law. You could have accused. You are a criminal. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Hello, जी हर चीजें मिल रही हैं about the May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. भाई यहाँ तो कुछ चल रहा है, ये सीन चल रहा है देखा जाए तो. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. भाई दूसरों से इंटरैक्ट करूँगा तो मुझे उनकी हाइट तो मिलेंगी बातें. ठीक है अभी ये हमें कभी-कभी ही देखते हैं. Hello, young man.
I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. थोड़ी देर बात कर ले. Let me. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on. Oh भाई साहब, hypnosis करके I'm हम Harry, चल लो. by the way. Even Harry. my dreams are soaked with glue. क्या है भाई? ये have to pick क्यों आ रहा था? चलो इसे लपेटे में लेने से पहले मैं देख लूँगा कुछ बताओ. Is there only pain and suffering in this world? भाई ये तो अपने में ही लग रहा है दुख तकलीफ वाला सीन. पहले थोड़ा सा अच्छी तरह इसके सामने Even my dreams are soaked with glue. इसके सामने इसका घर लूट लेते हैं पहले. Is there only pain and suffering in this world? भाई जैसे म्यूजिक चल रहा है ऐसा लगता है वो बहुत बेचारे की तकलीफ दुख तकलीफों में जी रहा है. इसकी मिसरी दूर कर दे क्या? इससे बात कर लेते हैं. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? है मेरे पास, इसको दे देते हैं चलो. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. कोई बात I नहीं. don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. ये ले यार तू मेडिसिन ले, Feel खुश हो जा. better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living longer in a world like this. But I thank you for your concern, sir. इसको मैं जीने दूँ क्या इसके बाद? आई थिंक थोड़ी स्टोरी बन जाएगी, देख लेंगे. हाय आई थिंक अभी जीने देंगे. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. अरे मैं अगर को दवाई She दी ना said I एक should नंबर go हो out जाता. more. I think stream की प्रॉब्लम, स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो गई स्ट्रीम में प्रॉब्लम. क्या से आई थिंक अब ठीक है. यस आई थिंक सो. लूप चल पादी से अपनी नैया की तरह चल पड़ी. चलो कंटिन्यू करें. मुझे लगा how do you feel? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. I died once without my father noticing, and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. Okay. It's the living I'm afraid of. ये बताया नहीं यार मैं अपडेट हूँ. ओके इसका मुझे टी शर्ट
सच भी पता लग जाता ना, अभी मरता मेरे हाथों से। दैट केस अभी है नहीं तो कुछ करे। Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Not guilty of your father action. Did you talk to Mr. हाँ ये बात है। But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. भाई साहब, ये तो काहे खत्म नहीं होता। Goodbye, young man. Take care of yourself. एक क्या और नहीं, अभी ये बार मैं मरेगा मैं। Pain and suffering in this world. क्या करूँ, इसे लुटका दूँ क्या? बस एक ही रह रहा है देखा जाए तो। उसका पापा कहेगा मेरा बेटा कहाँ चला गया रे? सिचुएशन बचा दूँ। लग रहा है मैं बचा तो सकता हूँ, मुझे भी पता है, बट आना चाहिए। वैसे भी ये थका हारी वाली फीलिंग है इसके अंदर। It's locked. इसे मेजरी से दूर कर ही देते हैं, क्योंकि वो तो रानी जो वेरी कॉल लेटर ये लो भाई। प्रोफेशनल वैम्पायर हंटर, ये कुछ गलत बात है। मैं करा नहीं चाहिए कुछ। ड्रीम स्मोकिंग, आई थिंक उसको हक मार ही देना चाहिए। वो ऐसे भी बेचारा रो रहा है, अपनी लाइफ से तंग है भाई वो बंदा। आजा यार, तेरी लाइफ खत्म ही कर। मुझे पता है उसके क्वेश्चंस जो इसके हाइड है, पर्सनल क्वेश्चंस। Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. ओके, ये बंदा ही बड़ा नल्ला है। दो सिचुएशंस हो रहेंगी। मैंने इसे मार दिया तो मुझे बाकियों का नहीं पता लगेगा। कुछ बाकी को जैसे पता लग सकता है। अभी तो टेक केयर कर। Even my dreams are soaked with मैं सोच रहा था इसको मेजरी से दूर कर दो, बस अभी दो हो रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है कि बगल में खड़ा है बस ये आराम से। बगल में है कौन है? District has always been wretched. Don't let your guard down, sir. ये क्या चलेगा? Blinded by your false faith, ये कौन है अभी? imprisoned by your daily routine. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. ये क्या बात हुई भाई? गलती है बे। लेवल 5 है भाई साहब। Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Okay, don't like nurse. I hate nurse. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. Okay.
That's what happens when you let a woman get involved in politics. ये बात तो. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work? Yes. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. ये क्या बात है? It's obvious only they have the necessary moral fiber. ये तो अलग ही आइटम है. I'm not more lost than. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Yes. Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. कोई ढूंढ रहा हूँ मैं जब से मैं. ये बात है. I believe only in the fact. I am listening. I'm listening. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. Yes. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning. अरे मेरे पास मेडिसिन है भाई. The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. उनसे भी सभाई क्या चल रहा है? I have heard enough. But is your plan? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. क्या आग चला देगा क्या भाई? भाई नल्ला ही है. होगा ना? How exactly will you? Tell me, Tobias. What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. देखा ना? जला देगा भाई ये बंदा. Science is our only hub, but where do you put the limit? It's a twisting country. Science and progress are our only hope against the monstrosity hidden behind this epidemic. See, Doctor? Now you acknowledge the presence of evil within the city's walls. अरे भाई. Now you start to admit the truth. भाई इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए भाई. Hiding face. इसको बहाव में लेके जाना था. गलत हो गया. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science. But you... अरे यार. I am. What do you mean? Quite a... What do you mean? The beast. I... अरे यार. मन करे से मुक्का मार के बेहोश कर दूं भाई साहब. मेरा एक तो फैक्ट चला ही गया वैसे भी. Excuse me, sir. Are you familiar with this यही part तो of इसको तो town? ढूंढ रहे हैं भाई. Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, Oh, a bhai, famous sir. surgeon. Famous. I'll gladly help if I'm able, sir. About the underground medical distillation. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Nuts, I know in comparison, I confident. It's confidential. I care about public health. I care about public health. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. I'm sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. Yes. What do you know of her accomplice?
a man named Darius. I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Okay. I has not relative. He's has no relative and he never got out. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? Okay. How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. वो भाई distraction था उसने भगा दिया. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let पकड़ना him. पड़ेगा Where उसे can I find समझा. this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. चर्च के पास हम इसे ढूंढ सकते हैं बंदे को. ये बंदा नल्ला है. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? Yeah. It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Yes, this is only logic. Only logic. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. ये बात तो है. कैसे करेंगे stop? और ऐसे थोड़े ना हो जाती है. What is a journalist चाल भी doing ऐसे हो in this जाती है. bar after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. I risk your life into travel. The truth is the public interest. So you risk your life to reveal the truth. Okay, reveal. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Okay, अच्छे काम कर रहा है. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to tell some stories. Independent तो तूने कह दिया बेटा. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Yes. होना तो चाहिए मेरे ख्याल. अरे वाह ये भी नल्ला निकला. नल्ला तेरे को देता हूँ रुक जा. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. ये ले भाई investigation कर मेरे लिए. Assist in investigating the most pox-ridden boroughs of London. You must accept the risks. Thank you, sir. ये ले तू हो जा तैयार. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? This is additional explanation. It's not a simple epidemic. Rational has been recently shaped. It's not that. I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Say the same. Same of the sick I saw here of. My God, what's happened to them? Goodbye, Mr. Darby. मैं लेंगे. चल Paytm में ले सकता था क्या मेरे को देखना. Good evening. ना भाई 4 लेवल. Goodbye, Mr. Darby. Hello everyone, welcome to the stream. Hello. मैं 2 दिन से कोड कर रहा. मतलब कोड कर. यहाँ हम जा सकते हैं. खुला गेट खुला भाई. नहीं बंद हो गया. अभी खुलेगा क्या साइड से? यस खुलेगा. अब ओपन हो गया पर कौन है भाई? ये ले भाई चीखने लग गया पहले. मैं देख लेता हूँ कुछ मिल जाए मुझे. इसके पहले बहुत ही मन करे हाव हाव कर रहा है. और क्या भाई ये 2 कहाँ से आ गए? वह 3 आ गए बे.
मुझे अपनी वो देख लिया, मुझे 5 बार टैग हटा हो तो चल मुझे मस्त है बे अल्टीमेट। नेक्स्ट अल्टीमेट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के पहले एक तो अरे एक को जगना था, 1 दिन 2 दिन एक आइडिया दो ना जो डे टू डेली लाइफ। आइडिया मीन्स आइडिया कैसा आइडिया, मतलब किस चीज़ का जो डेली टू डेली लाइफ में काम है। आइडिया मीन्स कैसा आइडिया चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक एग्जांपल दे सकते हो फिर मैं उससे रिलेटेड बाकी भी बता सकता हूँ। निकलेगा निगेटिव निकलेगा ही नहीं परमानेंट जो डेली लाइफ में काम है। एक आइडिया प्रोजेक्ट बनाना है डेली लाइफ। अच्छा तो वो है ना जो फाइंड एक्चुअली इन द एरिया मेरा An angel made flesh, I tell you. कैसे हॉस्पिटल वाले अपने वाले रिकॉर्ड लिए अच्छा वैसा डे टू डेली लाइफ में तो डे टू डेली लाइफ में क्या हो सकता है। वैसे ये चीज़ मैं कहूँ ना तुम्हें इंटरनेट पे अच्छी मिल जाएगी मेरे से ज़्यादा। इससे पूछ रहे थे डे टू डेली लाइफ में इसके लिए अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। इसमें तो एकदम फ्रेश होगी कुछ चीज़ सोचनी पड़ती है रिसर्च करके तो मैं आइडिया मिलता है एक अच्छा सा। ऐसे पूछोगे तो नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। तो इससे भी बात कर लेते हैं। Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. दोस्त लोग ये तो ऐड तो मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा अच्छा मैं समझ गया नोटपैड वाला सीन। एजेंट ऐप से बस ग्राफ
ग्राफिक्स क्या रहे हैं ये। हाँ ग्राफिक्स तो बहुत अच्छा, ये तो मैंने एकदम लो कर रखे हैं अभी ग्राफिक्स पीसी के लिए, मतलब वो थोड़ी स्ट्रीम में लैग हो रही है इस वजह से। नहीं तो एकदम मस्त ग्राफिक्स हो सकते हैं इसके हाई कर दूँ तो। ओ बस इसका मतलब जो तुम कह रहे हो ना, मेरे को सोचने दो और क्या चीज़ हो सकता है। एक मर्चेंट का भी देखा जाए तो मर्चेंट का भी हो सकता है। लाइक कोई मर्चेंट है, उसका कोई भी किसी काइंड का भी मर्चेंट है, वो तो भाई बहुत पुराना हो जाएगा मेरे ख्याल से। किसी चीज़ का भी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है मर्चेंट का, लाइक जैसे तुमने कहा गाड़ी ट्रैवल्स का, ट्रैवल्स मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड हॉस्पिटल हो गया। और क्या चीज़ें देख सकता हूँ अराउंड सराउंड में देखा जाए तो। शॉपकीपर का भी देख सकते हो, मतलब उसके ट्रेड वगैरह का। हाँ हाँ मैं समझ गया वो चीज़, तो ट्रेड वगैरह उसी चीज़ का तो होगा, मैनेजमेंट ट्रेड का। कितने पैसे के, कितने आए, प्रॉफिट लॉस गेन। इन शॉर्ट यूट्यूब स्टूडियो ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा आइडिया दिया तुमने। सही है भाई, बहुत चीज़ हो सकती है और भी हो सकती है कि और हर चीज़ का बिजनेस है भाई, हर चीज़ जो मर्जी बिजनेस उठा के देख लो, उस सब चीज़ का मैनेजमेंट हो सकता है। ऑप्शन लो मस्त से, अभी तो वो देंगे मुझे सीक्रेट्स भी हाइड करने, वो हाइड वाले वो भी वो करने हैं, मतलब अपीयर करने हैं, जो यूज़ करना चाहिए वो लो। हाँ ये तो मेन क्विज है, इसको तो करना ही पड़ेगा कि मैं इसको May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. Okay, about Darius. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. तुम इसके चेहरे के रिएक्शंस देख रहे हो जब ये बोल रहा है भाई साहब, मतलब इतने प्यारे हैं। I'm looking for Dorothy Crane. बोलते रियलिस्टिक लगते हैं भाई बहुत ज़्यादा। Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of it. है ना? ज़्यादा ही भाई एकदम रियलिस्टिक हैं एक तरीके से देखा जाए। अभी तो शायद मैंने ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं पूरे नहीं हाई नहीं कर रखे। May I ask what you're doing at this hour of night? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. कितनी बची है गेम और? अभी तो बहुत सारी बची हुई है। अभी तो मतलब एक तरीके से स्टार्ट ही हुई है। लाइक इसका कंट्रोलेबल माइंड भी है। अभी मैं पहले लेवल पे हूँ और ये 6 लेवल तक है। सोचो कितनी लंबी स्टोरी है इसकी। बट मैं इस स्टोरी को शॉर्ट भी कर सकता हूँ इन्हें खा के। जितना जल्दी खाऊंगा फिर वो बीच के स्टोरी गायब ही हो जाएगी, तो फिर वो स्टोरी नहीं बचेगी, तो फिर शॉर्ट हो जाएगी स्टोरी। फिर मैं बंदे ही खा जाऊंगा। लाइक मैं हिप्नोसिस करके इनका ड्रिंक कर लूँगा एक्सपी के लिए। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये है ना, ये एक्सपी है, तो भी कोल्ड हो रखा है। ये एक्सपी के लिए मैं इसे मार दूंगा और मेरे को एक्सपी मिल जाएगी, ये मर जाएगा, तो स्टोरी उससे शॉर्ट हो जाएगी। वो वाला सीन है। स्पीड रन स्पीड रन हो जाएगा, स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि फिर स्टोरी रहेगी नहीं वो सीन, क्योंकि फिर सब कुछ ख़त्म ही हो गया। स्टोरी का कुछ पता ही नहीं लगेगा कहाँ से क्या हो रहा है। मैंने शुरू में एक बंदे को मार दिया था गलती से, तो वो फिर स्टोरी बीच में ख़त्म हो गई। बट उससे एक नई स्टोरी भी है, जैसे ये रिलेटेड है ना, देखो ये दोनों रिलेटेड है इस बंदे से। तो मैंने इसको मान लो मार दिया,
तो ये अब कभी ना कभी तो मिलेंगे, वो वाला सीन रहता है। तो ये कहेगा ये गायब हो गया या डिसेपियर समथिंग या मर चुका है ऐसा समथिंग, तो उससे वो एक अलग ही स्टोरी बन जाती है। तो मैं थोड़ा केयरफुली अभी देख रहा हूँ कि किसको मारूँ किसको नहीं, और किसको कब मारना चाहिए, क्योंकि मैं मारूँगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, नहीं मारूँगा तो मेरे को एक्सपी नहीं मिलेगी, फिर बॉसेस भी आते हैं ना इसमें, बीच बीच में फाइट हो जाती है, वो फिर दिक्कत करते हैं। मेरी हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर मैं क्या ही करूँगा। नॉट आफ्टर द एपिडेमिक, अरे क्वेश्चन क्या था, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया इसका। डिवाइड But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. मैंने राज स्किप कर खेली थी, कुछ नहीं समझ में बट गेम 6 घंटे में ओवर। बट ये ना स्टोरी को मतलब एकदम रियलाइज करके एकदम मज़े ले लेके खेलो ना उस चीज़ को समझ के कि क्या सीन चल रहा है, तो और ज़्यादा एकदम अच्छी लगती है। बट मानता हूँ ये स्टोरी गेम्स बहुत लंबी होती है, जैसे अभी इसे मैं खेल रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसको खेलते खेलते 4 घंटे 8 घंटे मान लो मैक्सिमम, 8 घंटे हो गए पिछली सीन्स को मिला के। बट अभी ये स्टार्टिंग हुई है एक तरीके से देखा जाए। अभी सोचो कितनी लंबी गेम अभी पड़ी है, चाहूँ तो इसे मैं छोटी भी कर सकता हूँ मार के सबको, बट सोचो कितनी गेम लंबी पड़ी है, तो इसलिए मज़े ले लेके खेलो। अरे बैक नहीं करना तो। May I ask what you're doing? Not If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. ये क्या था इसमें समझ में नहीं आया, क्या था इसमें? अरे राजी खेलने में पता चला कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री अच्छी से डेवलप हो रही। नहीं ऐसा भी नहीं है, एक गेम अभी राजी आई थी वो अच्छी थी, बट अब जैसे वो आ गई फौजी, देखा तुमने क्या सीन हो गया। बट वही है ना, कुछ अच्छी है और कुछ तो कुछ भी है, ये वाला सीन है। अभी मेरे ख्याल से एक वो कह रहे एक और आ रही है गैंग वॉर पता नहीं समथिंग, ऐसी कुछ एक और आ रही है, हाइप बनी हुई है उस चीज़ की, पता नहीं हाइप बनी है क्या नहीं मुझे याद नहीं, बट वो सारे मोटल वगैरह स्काउट आई थिंक कैरी भी गया था उसके, उसमें क्या कहते हैं वो जो सेमिनार टाइप कुछ होता है समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा सी वर्ड, वहाँ गए थे जब उसका लॉन्च हुआ था। तो अभी देखते हैं एक और गेम आएगी, अभी एपेक्स भी आ चुकी है, मैंने एपेक्स भी ट्राई करी है, बट मैं स्ट्रीम पे नहीं खेल सकता, पिंग का इशू पड़ता है, क्योंकि अभी पिंग नहीं आ रही, मैं ऑफलाइन गेम नहीं खेल सकता हूँ सिर्फ। बट वो एपेक्स लेजेंड भी एकदम मस्त है, अभी वो भी कह रहे हैं वो भी आएगी वैलोरेंट मोबाइल, वो भी मस्त हो सकती है। गैंगस्टर बन रखी बैन या बन गैंगस्टर बन रखी उसकी गैंगस्टर मुंबई गली इज इक्वल टू इंडिया GTA 5। अरे भाई बैठे बैठे दर्द होता है मम्मी। राजी मुंबई गली आएगी मैं खेलूंगा। अरे राजी के थोड़े ग्राफिक्स अलग ही थे देखा जाए तो, जैसे वो नहीं होते क्या कहते हैं पुराने टाइप की, वो जैसे स्टोन एज का टाइप नहीं होता था, वो चित्र एकदम वो दीवारों पे होते थे उनके, वैसी थी गेम देखा जाए, स्टोन एज के टाइप जैसी थी थोड़ी, जैसे उसके चित्र होते हैं ना कलरफुल एकदम मस्त थी, बट वैसी लगी थोड़ी मुझे, ये मेरा ओपिनियन है कि उसके जैसे फोटोज़ वगैरह थी ना वो वैसी थी, जब वो समझाते हैं गेम वैसी नहीं थी, मतलब गेम 3D थी, बट जब स्टोरी मोड चलता था ना तो जैसे वो स्टोन एज वाली फीलिंग आती थी थोड़ी थोड़ी। What are your thoughts on the terrible situation in the city? Terrible, you say? No.
Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Yes. Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. क्या बंदा है भाई ये? भाई साहब ये अलग ही आइटम है ये वाला बंदा तो। मैंने ट्रेलर देखा है मुंबई गली का, दिल खुश। अरे चाचा जल्दी बात खत्म करना, बट बोला है क्या? हाँ, इनकी थोड़ी बातचीत लंबी चलती है, बट इनकी बातचीत से ना दूसरे की वो खुल जाती है, हाइडिंग समथिंग, हाइडिंग हिडन बातें। नॉलेज देते हैं ना एक दूसरे से रिलेटेड, जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में पता लग जाता है। Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. ये मर नहीं सकता ना, अब इसको पहलता मैं ज़्यादा इसे दस के चढ़ रहे हैं। I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. और एक ना गैंगस्टर न्यूयॉर्क आ रखी है पीसी पे, वो GTA 5 जैसी बट बेटर है। उसका मोबाइल वर्जन है, खेलना पड़ेगा। पीसी जी के लिए स्पेस थोड़ा हाई है, मेरे तो 1 मिनट है बस। पीसी है बस, अरे कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में इतना ही होता है। Would help you if you don't in danger. If some misfortune came upon you, कौन तेरी who हेल्प would be करेगा? here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. सोचो डॉक्टर ही से खा जाए तो किसकी हेल्प मांगेगा भाई? इसका तो थोड़ा था, इसका थोड़ा हाई है भाई, इसने तो खत्म था ये बंदा। मेरे पास ये नहीं है यार। आई थिंक अभी कोल्ड वाला मुझे बनाना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा। इसके पर्सनल क्वेश्चन अभी भी हिंदी में है। Why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Okay. Example? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Okay. अरे ना GTA 5 जैसे ही है, बट थोड़ा कम साइज में, जैसे रोड एंड वैलो डिफरेंट है, वही इन दोनों। रोड और वैलो तो अलग अलग ही है। CSGO और वैलो है थोड़ी डिफरेंट, बट सेम ही कैटेगरी में आती है। Do you not think it's a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. ये लो जी, एक और के बारे में पता लग गया। Hide available, int available, sorry, hide. Don't know her. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? अरे कोई नया गेम ट्राई करने का प्लान है इसके अलावा?
मेरा अभी एपेक्स भी मेरे को स्ट्रीम करने का मन कर रहा है, एपेक्स मोबाइल वाली, वो भी मेरा मन कर रहा है उसको मैं खेलूँ, बट वो है ना अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है पिंग की, दैट्स वाई मैं खेल नहीं पाऊँगा। अगले महीने से मैं ना, शुक्र अभी ब्लैक नहीं हुआ, अगले महीने से करूँगा मैं फुल, मतलब एकदम नया वया लगा लूँगा। अभी तो उसके पैसे ही दे रखे तो लगा ही रहेगा, बट अगले महीने से मैं एकदम जियो फाइबर सोचा है मैंने, तो जियो फाइबर लगाएंगे, उसके बाद करेंगे रेगुलर स्ट्रीम। फिर मैं सोच रहा हूँ उसकी ना एक स्ट्रीम लगातार करता रहूँ, जैसे वो रैंक बढ़ाते हैं ना, क्या नाम है, प्लेटिनम या समथिंग डायमंड तक, रेगुलर एकदम लगातार स्ट्रीम चलेगी। उसमें मैं ये कि स्ट्रीम बंद नहीं करूँगा 2 दिन 3 4 दिन, जब तक मैं पहुँच नहीं जाता डायमंड पे तब तक स्ट्रीम चलती रहेगी, ऐसी मैं सोच रहा हूँ अभी। बट उसके लिए अभी ये ना स्टेबल नेट चाहिए, और वो सभी पिंग तो वैसे ही हाई चल रही है, तो गेम में तो फिर मैं जीत लिया, हो गया मेरा फिर, जब इतनी पिंग ही हाई होगी। एक गेम है 3on3, देखना स्ट्रीम पे मज़ा आएगा। कौन सी वाली? एंड में नहीं, एपेक्स ही है अभी तक तो गेम मेरे ख्याल से दिमाग में, और मेरे ख्याल से मेरे बहुत पड़ी हैं गेम इस पे भी, क्या नाम है ये, अरे क्या है ये, एपिक लॉन्चर पे भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी है गेम। स्ट्रीम पे कौन सी वाली? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. What could ओके ये हो चुका है। I'll leave you alone. तूने दिमाग का नहीं पकड़ा करके सुन मेरा। थ्री ऑन थ्री ना जाए था उसका नोटिस मेरे को, नाम क्या है उसका? आगे कहीं है, जासिम सिंह, कर अनलॉक हो गया। ठीक है अभी लोअर स्पीड, हेलो मैडम। Good evening, miss. Gotcha. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. अच्छा Camellia. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. I mean, but I mean no harm, truly. अरे नेम है बताया, 3on3 फ्री स्टाइल बास्केटबॉल वाली आईडी के मल्टीप्लेयर है कि नहीं? अच्छा नाम ही यही है। ओ भाई साहब ये अलग ही सीन। टेल मी अबाउट, अबे बताएगी कैसे, तो गूंगी है भाई। क्या है यार, वो बोल नहीं सकती और ये बताने के लिए कहना मल्टीप्लेयर है। हाँ फिर तो आएंगे मजे, बट मल्टीप्लेयर के देने चाहिए होते हैं ना, जाने मिलते ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये रहती है। Tell me about Richard Nethercott. गूंगा भी बोलेगा भाई। I understand he is quite fond of you, Camellia. तो बोल ही नहीं रही। क्या था भाई, मजाक चल रहा है। हेल्दी है 5000। ओह माय गॉड क्या है भाई, 5 लेवल है भाई इसका तो। इसके तो सारे हिंट खुले हुए हैं, इसको तो लपेटे में भी नहीं ले सकता। I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. अबे बोल तो रही नहीं है ये कुछ, क्या चल रहा है भाई? I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? अरे भाई वो समझ कैसे रहा है भाई इसकी? बास्केटबॉल खेलेंगे? अरे बास्केटबॉल मैंने GTA 5 में वो खेला था। Goodbye. क्या कहते हैं, रैकेट। फाइंड अ मेल बॉक्स। मेल बॉक्स
Mailbox कहाँ है? I cannot enter. I think यहाँ चले जाओ. In the area. थोड़ा सा इधर है. यहीं कहीं होना चाहिए. ये रहा mailbox. The content of Darius' letter to him. Okay. Children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. क्यों? अच्छा मैं तो अभी विजिबल हूँ ना सबके लिए. That's fine. हर कोई घूमता फिर रहा है भाई. Don't be shy, handsome. अरे भाई What साहब. can Christina do for you? इसके मुंह पे तो लाल टपक रही है भाई. But I'd like to ask you a few questions if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. ओ भाई साहब. इसको देते हैं पहले इसको ठीक करते हैं. I think ये कुछ. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Okay. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so you know used that. to liars with good manners. Thank you, sir. अब शायद थोड़ी बात बन जाए. पटा लिया हमने इसे. 500 सीधा हो गया. 400 समथिंग ऐसे कुछ. इसके बारे में पता नहीं करा हमने. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Okay, ये तो भाई nice woman थी. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Bye. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? ये बात Or भी है. about poverty? Or anything else you have never suffered from? जो सफर करे उसे पता होता है. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. भाई अभी तो इसने मेडिसिन ले ली मेरे से. क्या है भाई? Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. ये बात भी है भाई. You can put your own life Money in चाहिए danger, भाई. that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. क्या वरी करना चाहिए? Original question. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. ये बात भी I है. am, पता नहीं however, क्या curious करोगे. as to what led you into this career. Short story. ये तो दूसरा career The लगता war, है वो वाला. exile, and England. ये वाला. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. ये बात भी है भाई. ये गलत बात रहती है. बात कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज़ का. I don't judge you. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. ये बात तो है. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. ये बात भी है. मेरा कंसर्न नहीं है. मुझे तेरे को मनी चाहिए. Goodbye, miss. Bye bye, miss. Take care of yourself as best you can. हाँ ध्यान. टॉपिक 4 लेवल भाई. सब हाई लेवल्स बंदे हैं.
ये है थोड़ा नल्ला, ये है थोड़ा नल्ला नल्ला इधर से। हाँ कुछ लगाऊंगा। हेलो, कोई है क्या? टक टक। Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. देख लिया मैं तेरे को, ज्यादा ड्रामे मत कर। Management level 2 required. I have to man talk. Wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Yeah. Shall Fine, we sir. speak man to man, you and I? You and I. All All right, speak up. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you Mr. are. Doctor. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Oh bye. Make me regret this though. Band to band talk. भाई काम कर गई। Oh yeah. नहीं फाइट नहीं करनी, फाइट नहीं करनी फाइट नहीं करनी। इसकी लंग्स की बीमारी के लिए मेरे पास आइटम है क्या? क्या वो बीमारी की पता नहीं। हाँ है, इसकी बीमारी की ऐसी कुछ ऐसी है मेरे पास सबकी। पैसा चोरी करेगा भाई साहब, पैसा चोर बोलते ही, पैसा बोलता है रे बाबा। क्या करे, सब उठा लेगा तेरा भाई। ये टैब दबा के कह रहे हैं। और It's locked, all right. भाई खुलती कैसे भाई? चाबी वाबी तो है नहीं मेरे पास। ये खोल दे टैगर। मैं तो तेरा मेंटल लेवल ज़्यादा ही है। लेवल 2 है मेरे पास, है लेवल फिर भी बनी है ज़्यादा नहीं। पैसा चुराएगा तेरा सारा का सारा। उल्ला सेम गायब कर देगा रे भाई। अरे दी लोग डोर, अरे 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 अनलॉक हो गया। ओ फाइनली लॉक कर गया। मैंने अगर साइड भी मैं खोल लेता हूँ, कुछ है तो गिरा खुल्ला सिम और कुछ है यहाँ मुझे पता है। उस घर के अंदर है भाई। आई थिंक मैं कहीं चढ़ सकता हूँ। हेलो डॉक्टर से मिले, भी तो कर सकते हैं हम कितना का। अरे ये तो वेपन्स मेरे निकल जाते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आदत से मजबूर रहे। ऊपर है बड़ा प्रेम है, इनकी मिजरी दूर कर दूंगा। मन कर रहा है मेरा। और खे चल चल तेरी खे खत्म करूँगा। मुझे डॉक्टर का सामान नहीं मिलेगा, मुझे लगा मिलेगा, नहीं मिला। बस पैसे कितने हैं भाई? ज़्यादा तेज हो रहा हूँ, फैंसी होते हैं थोड़ा, मतलब जेंटलमैन बनता। कुछ तो चाहिए। तो इधर से ही तो आया था मैं। एंड कुछ और सबको गायब कर। ये कोई हो रही है अननोन बंदा बे, उसको मैं नहीं जानता। आया बस मैं रुक जा तेरे लिए। आया तुझे भी ले पेटे में। मुझे किसी और की बात भी आ रही है, मुझे उसकी आ रही है। सब वो कोई नहीं होता वैम्पायर करता रहता है।
लेटर ऑफ द नॉट पकड़ ली तेरी चोरी बोलेगी इसका ठीक कर उसका। हाँ लो जी ये भी बन रहा है। ओह ये Patient Raz Van Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Anything else I should know? Where are the salt? Anything I know? Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, doctor? आराम से बैठी रहे मेरे को करने दे। I must perform a I don't have any anesthesia. करने दे anesthesia बाड़े में जाए। I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. अरे भाई सब experiment करेंगे भाई। But he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me. Don't question me. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, doctor. वही तो अभी बच जाएगा नहीं तो बाद में खत्म हो जाएगा। क्या फायदा अभी जो कर रहा हूँ करने दे। इसको किसके क्वेश्चन नहीं होते। इसकी आंखें एकदम लाल लाल हैं और He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? अरे भाई नहीं। I must tune the artery. क्या करूं? Let me finish alone. Tune me artery. I must first suture the artery. Control करके करेंगे। Find the wound. Score गई blood. अरे भाई लग गए। Good. The stitches are holding. भाई यहाँ भी उसके वो आ रही How's है। he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. यहाँ मैं उसे पीने वाला हूँ। वो डाइन डाइन करी। Now, जो भी है whatever ये। A dose of epinephrine now. Now. Yes, doctor. जल्दी दे। ओबे तेरी को सीधे ठोक दिया भाई इसने तो। जाबे मेरे हाथों में मार। लग गए। I try my best. बट मैं डॉक्टर नहीं था। ये था बट मैं नहीं था तो। We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Yes, I know. You are true to your reputation, Dr. Reed. Dedicated and precise. No one could have done more. This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... चलो ब्लड ले लेंगे पता लग जाएगा। of the blood for analysis. अब आएंगे मजे। ब्लड एनालिसिस पता करेगा क्या सीन चल रहा है भाई ये। तो भाई ब्लड लेस मेरा ओवर कम हो रहा था मेरे ऊपर।
Khan. आने की रास्ता है भी नहीं तो। To what do I owe this courtesy? लोग है भी। क्या तो पड़े? अबे violent This जरूर is बच an पड़ते हैं। unfitting place for the illustrious doctor. I suspect it was more गया। than intuition गई। alone that led you to us. गई। So, how might I be of service, Dr. Reed? अब देखो ये भी खत्म ये भी खत्म चल तेरा काम खत्म पहले फुर्सत में निकलिए मेरे लेवल 2 हो जाने सभी लपेटे मिलेगी I have come to stop the blackmailer you can carry on this with this is illegal तो नहीं कहूँगा मैं ये कर रही है I will come to stop the blackmail. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and lied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. A blackmail must stop. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble Gaya. justifications. Gay. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Face, I am look away, but you resign. You will forget all about this. I'm ending this right now. Face. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. Never abandon. Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes, all gone. Yes. All gone. इसका मैंने करा क्या अभी? Level 2 हो गया क्या? A new civilization available and will be soon suffering more. गई बैठी. Hold the level 2 please level 2. आए. Oh. मुझे बस यहाँ पे तो क्या दिख रहा है यहाँ कोई बंदा बैठा नहीं है मुझे बस एक्सपी दिख रहा है 4000 बात भी कर पा रहा है अभी अलग सीन हो गया दैट्स मीन अभी इससे और आगे पंगे होंगे जिससे मैं सब पेटे में ले लूँ बंदा उतरी क्या बात हो गई दैट्स मीन आजा तेरे को भी लेकर अय्या उय्या होने पे ओबे तेरी भैंस मैं सबको बचाता फिर अबे तेरी भैंस तूने सबको मारा बे यहाँ बचा रहे हैं हम तुम बेशर्मो की हद होती है भाई क्या है बे बच्ची हम यहाँ बचा रहे हैं तुम सबको मार रहे हो ऐसी सब लुटका दिए भाई ऊपर तो है ही नहीं कोई अब हद हो गई भाई क्या नल्ले बंदे हैं सबको मार दिया अरे भाई क्या फायदा उसने मैंने तेरी वजह से तरफ ही रहता अलग बात है बट फिर भी अरे क्या हो गया देखते उसमें कुछ कर भी नहीं सकता था वो सभी को मार ही दिया था उन्होंने मेरे आने से पहले
मैं सोचता हूँ। अभी भी खड़ा है। अच्छा गाड़ी मुझे पता है, मेरे हाथों से मरेगा वो। गलती कर दी उन्होंने आगे, शायद मेरी गलती थी कि मैंने गेट खोल दिए। वो योर एक्शन विल बी। हाँ मेरी गलती, शायद मैंने गेट खोल दिया ना, इस वजह से वो अंदर आ गया और ये हो गया। दो जने हैं वहाँ भाई, बड़े वाला भी है वहाँ तो। अबे देख लिया आ रहा है। आई थिंक अभी आएंगे ले पता। आजा यार, अबे आए ही नहीं रे भाई, मेरे को ही जाना पड़ेगा लग रहा है। भागो, अरे भागना, मैं जाके किक करके मारूंगा। बड़े वाले से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ओ भाई भागो, आजा। अरे यार गलत जने पे हुआ, शिट। उतर इस वाले, अरे भाई इस वाले को मारना तो गलत पे लग गया, ये गलत सीन हो गया। मेरा वो अटैक भी ऐसा वैसा है। अबे ये तो कुछ जा रही है, कितना खून दे सकता है। भाई पियक्कड़ है भाई, एक नंबर का नहीं होगा इससे। बेसिकली तेरे का बहुत अच्छा बे यार, उन्होंने सबका मार दिया बे यार, जितनों को बचाया सब पेल पाल दिए। आई थिंक ये सब मेरी गलती है, बिकॉज मैंने ये गेट खोल दिए। हो सकता है क्योंकि ये भी ऐसे ही पड़ा है, इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं बट अभी फ़ायदा नहीं। मैनिपुलेट करूँगा क्या मैं, बिकॉज मैनिपुलेट करूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, उसकी हेल्थ भी ऐसी टल्ली सी है। मैप देख के देखते हैं, हमारे पास हमारा हाइड आउट यहाँ की साइड है, तो मैं आगे जाके लेफ़्ट मुड़ना है, लेफ़्ट के बाद राइट मुड़ना है एंड ये रहा यहाँ से यहाँ, ये रहा। तो यहाँ क्या है, क्यों ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है। टन 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 कहाँ है, थोड़ी मेडिसिन बनाते हैं। हाथ पल की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉल ब्लेड आई थिंक 2 बना लेते हैं, बहुत है। ये भी बना ही लेते हैं, ये भी एक बना लेते हैं। बहुत आइटम्स है अपने पास, आइटम्स की कोई कमी नहीं। ये वाली बहुत मतलब मेरे पास आते हैं लोग, इसकी रेसिपी नहीं यूज थी। सिटीजन ड्यूरिंग डायलॉग में कैसे यूज तो ये चाहिए, इसकी रेसिपी चाहिए बेसिकली। तो हो जाओ, मुझे मेरा नजर आए, मैं से निकाल लेता हूँ आइटम्स निकाल लेता हूँ। जब मैं थोड़ा और आइटम्स बना सकती, आइटम्स ही आइटम्स जितने हो सके को यूज करते हैं। इससे भी ज़्यादा नहीं मेरे पास आइटम है। ओ आ गया मैं, 1000 लगेगा भाई।
थिंक मुझे ये करना चाहिए था। ये बोल देगा अलग अलग जा रहे हैं भाई, ये कर लेते भाई, ये भी अलग अलग जा रहे हैं। शील्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, अल्टीमेट ना महंगा है, 2000 का है, नल्ला महंगा हो जाऊँगा मैं। ये बहुत काम की चीज़। आए क्या सीन है भाई अब हेल्थ का। हीलिंग का मुझे योर ट्रे इंस्टेंट हेल्थ गेन फ्रॉम अ ग्रेटेस्ट रिजनरेशन रिकवरी जल्दी हो जाएगी, हेल्थ 3000 हो जाएगी। योर ट्रेड मोर ब्लड टू हील योर सेल्फ, ये लेंगे हम भाई। मैं बताऊँ ये पता नहीं क्या है कुछ साइंस। फाइट तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, फाइट का तो यूज़ ही नहीं हो रहा। ब्लड कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते क्या? कैपेबिलिटी मत जो इवेंट योर चॉइस in this community pillar has been reported by the press। अरे भाई साहब क्रिटिकल हॉस्पिटल तक पहुंचाऊँ, जल्दी स्टेटस। मैंने सही करा चुका, इन दी एंड में पिटने वाला मुझे लग रहा है। मुझे पक्का बता इन दी एंड ना ये सब मुझे पेलेंगे बहुत गंदा, या तो मैं इन्हें अभी पेल दूं ऐसा लग रहा है मुझे, या तो ये सब मेरे खिलाफ जाने वाले। कुछ तो करना पड़ेगा दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक छोटा सा ब्रेक लेके भी मैं जाता हूँ। नहीं है क्या इसमें? अब तो हम इधर जाने हैं ना हॉस्पिटल में। इधर भी मर्चेंडाइज बहुत अच्छी है। तो गाइस मैं अभी आता हूँ थोड़ा फ्रेश होके, पानी भी लेके आता हूँ मैं। तो भी आया मैं गाइस।
बैठे बैठे बम दर्द हो रहा मेरे तो हमें कहाँ जाना I have this thirst for blood. अब तो लेवल 3 है ना वैसे लेवल और 4 है भाई अलग ही लेवल है ये तो लेवल 5 है और छोड़ा लेवल बढ़ते जा रहे हैं लेवल ओके बंद है ये तो हो रहा है अनलॉक नाइस मैं कहाँ पहुँच गया कोई तो खासा कोई दिख नहीं रहा बट क्यों है बोल दे भी खुल गया ना तो पहले से खुला हुआ था Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! अबे तेरी बॉस कहाँ से आ गए भाई ये कहाँ से आ गए अरे आराम से भाई अरे आराम से बहुत जाने हैं भाई बहुत बसा है तेरे बड़े शौक लग रहे बस तेरी अरे मैं मरा भागो इसकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा है ये बच्चे कौन सी क्या छोड़ रहे हैं मैं ये नहीं भाई साहब मर जा हाँ मुझे मारेगा ले आ जा चल बाय
इससे तो पूरा ब्लड चूसूंगा। भाई वो बॉस फाइट कैसे होगी एक तरीके से? कितना बोला जब ऐसे कुछ बॉस फाइट हो। फाइट नहीं कहीं। यहाँ कहीं वो कौन है भैया? अबे ये महाराजा क्या कर रहे हैं इधर? भाई एक से भिड़ के दूसरा चालू हो जाते क्या थी? अरे बस अरे बस मर जा मर जा ना। मक्का नहीं तो बड़ा हाँ तो मैंने कहा था पता नहीं आइटम जरूर आता आइटम दे देंगे। ब्लड 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 हर जगह ब्लड ही ब्लड ब्लड। देखते हैं क्या है इधर। नीचे ओके कर देंगे हम रिपोर्ट, कोई बात नहीं। आई थिंक मैं इधर आ चुका हूँ। एक पजामा बंदा वापिस क्यों आ रही है छुट्टी? और ट्रेजर वापिस नहीं आ रही, नमूने वापिस आ रहे हैं। ओया 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 मर रहा हूँ, ऐसा अलग बात है। बस अरे भाई अरे बस भाई इतनी क्या हाथ तेरे को लगी हुई है? जा सकते मरने का टाइम देने का का पीछे भी कोई आ गया हमारा। हाँ नीचे भी एक पजामा घूम रहा है, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया। और पजामा तेरा
वहाँ क्यों नहीं है कोई? तो बचा लिया तो मानता हूँ। ला ला ये हराम निकला है। मेरी तरह है। ओके बड़ा तेरी चौड़ा हो रहा है। जादू छाना बन रहा है बेसिकली। अभी एक फ्लैश में जाएगा। मैं ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा था। उतरा मुझे मार देगा। आई थिंक इधर एक बंदा होना चाहिए था, इसके लिए वो पहले हो चुका है। बट ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो नहीं, सबको निपेट चुका था मैं। पता नहीं क्या सीन चल रहा है अभी। ये वापस आके कि एक्सपी देने के लिए मर जाएंगे और एक्सपी दे देंगे। इसी में क्या चलो नीचे का रास्ता है। I can't believe I'm doing this. I can't believe this and doing this. काई ये मैप भी निकल रहा। अब देखते हैं बेसिकली जाना किधर है। कहाँ जाने हैं? यहाँ पे जाना है बेसिकली, याद है। कौन सा है भैया? चिल्ला रहा है अभी। We are back. We are back. We are back. We are back. Hello Tammy, welcome to this stream. कैसे हो भाई? मैं तो एकदम मस्त एंड जबरदस्त हूँ। इसका मेरे पास अभी तक इलाज नहीं है। इसको मैं खोल नहीं सकता। अंदर से खोल सकता हूँ, अंदर जा नहीं सकता। पर लंब हो जाऊँ कहीं और से है रास्ता। भी नहीं रखा कहीं और से। Sadly, it's locked. I'm managing a train terminal. हाँ इधर मैं भूल गया था, ट्रेडर भी एक नंबर का। एक नंबर का ट्रेडर। यहाँ किसकी लाश पड़ती है? पड़ी थी, मैंने घेरी भी थी, मुझे याद है। बट वो पता नहीं कहाँ है। ये नल्ले हैं, मर चुके। बल तू के बंदे किधर हैं? देखिए कहाँ पे है मेरे पास? कहाँ पे से हैं? यहाँ पे खड़े होके वहाँ पे जा करनी है हरकतें। कहाँ पे मुझे हिप्नोटाइज करना है। हिप्नोटाइज करती। अरे ये कौन है भाई? अननोन बंदा बैठा हुआ है। कैसे कर लूँगा? इन्वेस्टिगेट सिटीजन एक्शन कैसे करूँ यहाँ से? पीछे से ऑप्शन आ रहे थे यहाँ से। और ये बंदा कौन है भाई? आई थिंक जी करना पड़ता है। वेट अ मिनट, ये तो It's locked, all right. अनलॉक भी हो? मजाक चल रहा है? इस लॉक ऑल राइट करके अनलॉक भी कर दिया। रिप्लाई तो किसी और को करना है। इसका लेवल क्या है? लेवल 2।
इसको कर दिया तो ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इसका सन है, यहाँ सीन बैठ जाएगा। नल्ला भी है लेवल 4, इसका भी लेवल 4 है, इसका दिमाग का नहीं मिलता है। ओ ये रही लेवल 2 वाली मेरी, इसका भी सीन करना है बट मेरे पास पहले से नहीं है। हाँ मैं भूल गया, मुझे वो करना था ना, तो टॉक करना है। वो बंदा कहाँ है जिससे मुझे टॉक करना है? ये है क्या लेडी डैश वैश को भी है एशबुशी? ये भी नहीं है, वो बाहर होगी, इसको भी लपेटे में ले सकते हैं। कहाँ पे है वो लेडी? लेडी 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 प्यारी लेडी। मीटर अभी ओ ये वाली वैम्पायर है भी ये तो। कोई तो है उसके साथ में मिस्त्री, पता लग जाए कौन है। ये लो जी, हो गया कांड। बोला जी, क्या जवाब है इस चीज का? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. We trust you. We trust you. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. No need to apologize. We are vampire after all. करके मुझे इशारा कर रही है, so that well, so the association was truth. Association. हर जगह तो गर्दन हिलाई जा रही है। So in the end, the accusation was true, wasn't it? Accusation. No. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. About me. Voice my head. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Okay. Are you my maker? This cause offense. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution.
and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Okay. I am a vampire. Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Ekon क्या है बे? Are you an Ekon too? No. Yes, I am. Okay. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Your blood? मतलब इसे अपना blood देना पड़ेगा वाह. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Okay. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a Scarl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Okay. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Okay. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. अरे भाई. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets.
I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad? Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. When I awoke, changed. I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Night time? Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Okay. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Yes, Jonathan, please do. I bid you farewell. इसके साथ में कुछ नहीं हो सकता अभी. It's safer here than anywhere else in the East. Good evening, Milk. Good evening. I'd like to see your goods. Wise choice. ऐसा मैं अपनी शॉटगन बेचना चाहूँगा. सब ठीक है ना, पहले ठीक वाला सीन भी. आई थिंक ये पेटे में आ सकता है. फिर देखेंगे कि इससे बात हो सकती है, कौन कौन हाइड कर रहा है. उसके बाद पेटे में लेते हैं. पहले एनालिसिस कर लेते हैं. लट को It's locked. Long time no see. Get up. Lights. Stamina is. उसे stamina मिल गया वा.
Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. ये मल्टी डैमेज करता है वाले फोन। हो जा रहा भाई। $20,000 ये थोड़ा कम है, नहीं करता मैं इसे करना चाहूँ। कितना टाइम हो गया ना, बाइट नहीं करा किसी को। अभी तक तो स्टेबल है, सीरियस नहीं थी। मैं इसका तो कुछ कर नहीं सकता ना, मेरे पास है ही नहीं इसकी रेसिपी नहीं। आई थिंक इससे ले सकता हूँ, इसके बच्चे को लेगा तो ये गायब हो जाएगी। आई थिंक इसका दिमाग का नहीं है, दिमाग का नहीं ठीक करके मुझे इसको ठीक कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ घूम रहा है। इससे मिलेंगे तो इसे भी दे देंगे। चला गया बे। तो गड़बड़ है भाई। मैं भी देख रहा था, मिला था ना मेरा। तो बहुत ज़्यादा खाया टारगेट तो स्टन हो जाएगा, बट फायदा नहीं, बहुत बढ़िया। 15 भाई साहब। ये तो रेयर केस है, ये भी रेयर केसेस में आता है। बस इतना काफ़ी है। तो इसकी चाहिए यार, ब्रेन वाले आइटम्स भी मिल गए। उन्होंने रिपेयर भी कर सकते। हाँ तो चल रहा है गलत से यहाँ एकदम सही है, स्टेबल है, यहाँ भी स्टेबल है। इस साइड थोड़ा गलत सीन चल रहा है। आई थिंक यहाँ कुछ करना पड़ेगा और बात बनी क्रिटिकल। आई थिंक मैंने उसको रोक दिया ना, तो हेल्थ स्टेटस एकदम डाउन सा हो गया। इसको देना है, ये वहाँ की साइड है। 3
चलिए इनको ढूंढ के पहले इनको देते हैं। उधर की हेल्थ सेट है उनको बहुत गंदी हो रही है, समर के में। चलो मैं आया अभी 1 मिनट में। फिर वापस हो जाते हैं, ये अच्छी चीज़ है वैसे। The Pembroke is so lucky to have Dr. Reed with her. I'm letting him do अपने वेम्पायर पावर भी यूज नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो ये है सबसे बड़ी। ओह ये टेलीपोर्टेशन। लड़ने का मूड नहीं है, सीधा मेरे को उनके पास जाना है एंड तो मेडिसिन देनी है, सीधी बात है। ये वाले से बाद में लड़ लेंगे, पहले हेल्थ के वाले को सीन बनाते हैं क्योंकि मैं हेल्थ 50 कम की हेल्थ बचाऊँगा। भाई ये क्यों आ जाता है? वेरी गुड। क्यों आता है, कुछ तो बात है नहीं तो It's locked, all right. अदर साइड है तो बात है, इधर आता है। यहाँ है प्लेन की कंडीशन ठीक करो। I cannot enter. How I'm not your... इसके है किसके साथ है ये? कैसी नहीं लेवल 1 है बट इसका भी Goodbye, young man. Good evening. Daketa. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. But I still see a dark future ahead for my people. Right. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. Okay.
Very so aggressive. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. हाँ डोरेथी को मैंने हिला दिया था ना अच्छी तरह। Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. ये पिटेगा मेरे से भी। What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. अरे वाह। Vampires. You believe them? You believe them? Aren't you too old to hold a weapon and listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. That means मरने वाला है। Tell me a personal question थे इसके। बस। Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. ये मरेगा भी। Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Prochaska? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Really? Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. इसके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं बचे एंड बचे हैं क्वेश्चन में कि जरा इसका क्या सीन है। तीनों हो चुके हैं दोनों सही से। अब तो चल मैं मिटा दूंगा 2000 XP मिलने वाली है। How do you feel, Mr. Prochaska? Do you... I need... ये करना है मुझे। आजा भाई, हो गया अब तेरा काम। बहुत चौड़ा हो रहा था ना। चलते रहो बस, अब तू चलते रहो। आजा। ऐसा लगता है रिक्शा पे चल रहा है। Who will assist Dorothea helping our comrades now that I die? Small key. Small key that belongs to Doctor. To open a small chest for trunks. वो जगह कहाँ है भी? क्या लिख रहे तुम लोग? कुछ देख के तो लिखो, ऐसा मिलता तो लिखो।
Tell ambassador about God. Okay. कौन है You again? इसको चाहिए ना मेडिसिन ये Can I off keep you? There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. Goodbye, Mr. ठीक है तभी You again? Goodbye, Mr. Peterson. Recovering हो रहा है and भी देंगे क्या गुजार है क्या हो रहा है क्या हो गया बे अटैक क्यों गया तो भी देनी है बे ये भी Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. देखा जाए तो सही कह रहे हैं Right then. Show me what you have. देखा सब चीजें मेरी कंपनी एंड कोई और भी है क्या जिसको मेरी मेडिसिन वगैरह की जरूरत ठीक हो रहा है ये भी ठीक हो रहा है ये रहा चर्च वाला बंदा उधर होगा इसका मैं कुछ नहीं कर सकता मिसिंग आ रही है लिखी भी नहीं है मैं ड्रिंक भी नहीं कर पाया सैनिटाइज है वाला सीन कहाँ होगा Good evening, Miss. Don't you feel faith? No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. I have heard enough for tonight. Goodbye. ये भी रिकवर हो रहा है क्या मुझे इसे रिकवर होने देना चाहिए था ऐसा डॉक्टर तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ वैम्पायर के सामने सब रिकवर हो रहे हैं का हिंट मैंने गलती से हटा दिया होगी थोड़ी सी ये तो मेरे ख्याल से वहाँ है ना ये वहीं घूम रहा होगा जहाँ थोड़ा पार्क के बीच में समथिंग Good evening, Doctor. Can I... Goodbye, Mr. Darby. Farewell. It's locked, all right. जाए तो ये इधर खड़ा है और वो मुझे कह रहा है मैं ये कर लूँ क्या कह के दिखा और कैसे जाऊँगा It's locked. बात है मिला उनका क्या करेंगे
जा नहीं सकता। अरे तेरी नहीं खत्म करना चाहता हूँ क्या था मैं अरे पोस्टर वोस्टर साइड नहीं रही थी मेरी ये 15 और 16 भाग भी नहीं रहा भाई, क्या हो गया, अटक गया। इधर कैसे आ गए, कैसे तुम अरे भाई साहब बड़े वाला गलत आइटम। भाई तो ग्रीस वगैरह तेरी भैंस किसी कुछ भी क्या ही है हुआ करते रहते हैं। ब्लड खत्म हो रहा है। This man stunned me with his face. His crucifix. This is not good news.
डेकेटा से आ रहे थे, किधर जाते कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए यहाँ पार्क होना चाहिए था। एक ही जगह थी। कर रहा है अरे पकड़ लिया। दोनों मिलकर काम करेंगे, आएंगे कि इधर तक। अरे यार ये गलत है। हंटर के पास भी जानी चाहता हूँ, मैं हंटर भी नहीं है। हंटर भी नहीं करता है क्या हमारे से। यहाँ कुछ है मेरे ख्याल से। ये अच्छा करें। भाई साहब ऐसे गोली में चल जाते हैं। भाई साहब कुछ पूछते हैं। अरे भाई अरे भाई कोई वहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, शर्म तो आई नहीं। मरता क्यों नहीं है वो? एक स्लैश का रह रहा है बस। अरे बस भाई मरता ना लग जाते। लग जाते तू देना वेना कुछ नहीं है, इतनी हेल्थ कम कर देनी है मेरी।
उधर क्या कर रहे क्यों है? एक नहीं है, 2-3 है। ये वही जगह है जो अंदर है। यहाँ से शायद कोई बढ़िया माल मिल जाए। I have this thirst for blood. तो यार चूहे अब तो जरूरत है। अरे यार ये एंगल चेंज होता है, दिखता नहीं। तेरा काम खत्म। लेट जरूरत ही नहीं आपके चुन। एक ही है, ज़्यादा नहीं, एक ही से। मैं जब से देखता हूँ आस-पास में जो बच्चा चिल्ला रहे हैं, मियाँ हुआ मियाँ कर रहे हैं। तो है पर मुझको भी पता डर जाइए मियाँ है। अच्छा चल गया था, मैं अचानक से वाया हुआ है कि आज ये सामने भाई मामले खड़े थे। चलो मुलाकात करें। 13 लेवल, 13 नहीं सीधा 14 लेवल, 12 और 14। ये थोड़ा 14 वाला थोड़ा ज़्यादा चढ़ा होगा।
क्या एरिया में कुछ तो होना चाहिए था यार, बढ़िया आइटम होगा तो मैं आया। क्या था इधर, मुझे लगा कुछ होगा बढ़िया बढ़िया। धोखा मिल रहा, धोखा मुझको। सिटीजन का क्या हाल है? क्रिटिकल पे पहुंची सिचुएशन कहाँ है मुझे नहीं पता। रिकवरी हो रही है, यहाँ रिकवरी हो रही है, यहाँ भी रिकवरी हो रही है, एंड यहाँ नहीं हो रही। वो दिमाग वाला मेरे पास नहीं, यहाँ कभी नहीं पता। तो भाई ये पता नहीं क्या हो गया। जा रहे हैं ये मेन किस करते हैं जो चल रही है। अब आज देखेंगे क्या सीन होता है। This is despicable. जाना तो है बट मैं दूसरी साइड से भी जा सकता हूँ। necessary find a website that is something चलिए इसके कहते हैं नहीं देखता हूँ इसकी होम भी टाइम वाला नहीं दिमाग की ये क्या ऊपर जाना I cannot enter. Hello, my doctor.
Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? But different in France. Pain analysis lab. I never saw symptoms like this when I was in France. Not at all. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes, I have. I think I can share. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. I have thought about it. It's too dangerous. I thought about it. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yeah, right. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Condolences क्या होता है? I was and Mary. I need to talk to you. Please do so. Hospital finance. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes. Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Priwen. Zealots to the last man. By all organized, where do they come from? Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention. But they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast,
and I your accomplice. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous game. She's lucky Lady Ashbury abhors violence. We'll talk later. मैं बिना सोचे क्लिक कर दिया वो लेडी वाला बट कोई बात नहीं वार्निंग लेटर कभी इधर घुमा रे कभी उधर घुमा रे शर्म ही नहीं होगा तो किसी डॉक्टर के पास ही होगा पीछे वाले में एक डॉक्टर रहता है डॉक्टर पिछवाड़ी वाला I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. I swear. हाँ भी जगह वो ज़्यादा पिछवाड़े में आ गया मैं गलती आ गया भाई वो लेफ्ट साइड है मर्चेंडाइज से मिल जाता Good evening, Milk. Good evening. इसके पास तो कुछ नहीं होगा I'd like to see your goods. Wise choice. देखा नहीं इसके पास कुछ नहीं है बन के अलावा तो हथौड़ा दे सकते हैं Good evening, Milk. Good evening. इसे लपेटे में ले सकता हूँ पर पर्सनल क्वेश्चन खोलना चाहूँगा ठीक है सारे That's me. अच्छा ये तो उसी का साथी है चलिए इसे लपेटे में लेते हैं Do you need any medical help? I'm fine. का कुछ बचा नहीं है I'd like wise चलो इसकी बत्ती बंद Good evening, Milk. Good evening. जा तो देख तो नहीं रहा तो ये देख रही है टाइप करे पड़ते हैं कहाँ लेके जा रहा है भैया सबके बीच में से क्या हूँ देखा जाए तो कभी और पहले वाले को भी Pippa, my princess, flee away while you can, for all is lost. हो गन मिल गई फ्री में नाइस अरे गन भी मिल गई क्यों नहीं करना पड़ा यार
क्या हो रहा है? ठीक है लेगा क्या? कहाँ से सीधा सीधा जा रहा हूँ? यस। तो इधर की साइड तो अलग है ना, इधर की साइड अलग है ना। मैं इधर बंदे भी अलग अलग हैं। जाने हैं और इन सबका सामने मिलेगा। हाँ बाय। Take a breath of this! कहीं है शुद्ध कर सही कमाल है। रिलोड टाइम चलो कोई बात नहीं। ओ भाई ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा Hello, being in histórico. My dear sister, I don't know if I have the strength.
बहुत टाइम से मैंने खेला है। वेपन मेरा खाली है, मालूम खाली। Right blood cell. With the stamina regenerated by 100% for this. एक चीज और है इन दोनों में से एक चीज शैडो मिस्ट और इतना रिकवर एंड इतना एरिया रेंज क्लोज रेंज रेंज शैडो एक्सप्लोर द इंक्रीज रेंज एंड डैमेज एरिया बढ़ जाएगा बट 30% 30 शैडो डाउन हो जाएगी शैडो विल पुल इन अ single place all targets with this area are struck by a slide बढ़ गया फिर तो डैमेज बढ़ेगा भाई रेंज का तो कुछ ज़्यादा नहीं ये एरिया बढ़ता रहता एरिया नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता क्या नहीं अरे ये क्या भाई शैडो कम होती रहती है और एरिया कितना ही बढ़ा लेते हैं मेरा मांगा है मेरा कल हो रहा है भाई इधर कैसे तो दे दूँगा यार कोल्ड का मैं दोनों को देना है देता है यार मैं यहाँ हूँ जाना उधर जाऊँ थोड़ा नीचे को एक्सप्लोर करना चाहिए मुझे सही जगह पे मैं एक्सप्लोर भाई नहीं करना
यहीं से जाओ इतनी पतली गली से। क्या जाना है? It's locked. भाई फिर आ गया चेक करने का। मेरे पास पिस्तौल है, नहीं लगने के लिए आराम से भी जा सकते हैं। फिर भी ठीक ठाक है। At least a point when the weapon hit. टू-हैंडेड है ना, एंड में ये वाला ठीक है भी चलो। मैंने उसको इवॉल्व कर दिया ना, की करिए हेल्थ है ब्लड स्टैमिना। I have this thirst for blood. This is despicable. जाने आगे ही है रास्ते में से बिना लगे चल एक तक नहीं लड़के ही जाना पड़ेगा। इधर से होते होते इधर से तो होना ही नहीं है बेसिकली, इधर से ही होना ही नहीं, जैसे होते होते यहाँ पर
कटनी तो खुद से ही लेना। वाले का कुछ आएगा नहीं, क्या करेगा कि देख रहे ऐसे। कितना डैमेज हो गया पता नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा था होली सिंबल एंड खुल जाएगा तो मिलता है कुछ, ऐसा नहीं। Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I have this thirst. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. मिनरल कहाँ से टैंक करो? ऐसे जाना इधर से ही है, सामने सामने है जगह। अरे ये कहाँ से आ गया? कौन है भाई? अरे यार ये कहाँ से आ जाता है? अरे भाई मारा तो जब आउट मेरे ऊपर चढ़ रहा है। अरे कैसे मारता तो मार रहा था भाई, मार ही रहा। क्या कर लेगा, बचा लेगा।
से भी आए भाई। मजाक चल रही है क्या? चलो कौन है क्या क्या कर रहा है? तेरी बात इधर हमला। What do you want? Are you all right, miss? I don't know. They Who were want those to people? kill me. They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. अरे 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 Shouldn't you go? Maybe like कोई कुछ बताएं? नथिंग है इसका एक्सप्लोरमेंट कर सकते हैं। इसमें देखो भाई मैं यहाँ कैसे आ रहा हूँ? चर्च के It's लग locked, all right. इतना चमक रहा है सोना वोना तो कुछ तो होगा भाई यहाँ। गेट लग रहा था उसका। It's locked. ओके मैं पता लगता है आखिर भी मैंने एकदम सही कर दिया। मैंने किसको बता दिया? Stone. Damn rider. My rider. Go ride. Tombstone nearly. Okay. मैप से यही तो जा रहा हूँ। लॉक क्यों था भाई? तो लॉक हुआ है। Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. टेलीपोर्ट मारा था। गेट तो मंदिर तो कैसे इधर आ गया? मेरे से चढ़ के आया। I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, तो most जैसे उठ के merciful बाहर आ जाए तो Father, यूं करके इसने भी तो the चूसा soul of our sister departed, गलती से बन and गया we तो commit her body to the ground. Earth ये to इसकी earth, मम्मी ashes to ashes, dust to dust. एम का बटलर डॉक्टर है बटलर तो अरे भाई राम से Why kill my Mary and stick her here in this cold,
god-awful place. These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. लगा बीच में फेंक के आग लगा देगा। वो तेरी Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. It's a nightmare. This is a nightmare. आंखें देखो भाई। Jonathan, अरे there ये is भी nothing मरी you है। can do But but accept accept it. it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Give us kindness. Sound like a bad joke. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Oh, can I? Tell me how. Tell me how. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Follow the advice. Follow your advice. You may be right. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries. Century. And time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. उसकी आंखें वैसी क्यों नहीं हैं? Confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. देखना इसकी आंखें. ऐसा भी तो बहुत दूर है. इधर से रास्ता थोड़ा मुश्किल है. इधर से रास्ता थोड़ा मुश्किल. इससे खोलते हैं चलो. I cannot enter. इधर से इधर आ गया, बट इधर से उधर नहीं आया. ये भी सकता है अब शायद. It's locked. ये बात ही नहीं आना चाहिए. अरे कुछ चीज़ें. अरे अरे अरे. सही चार ही है. कुछ और नहीं, इसका डेस्क भी नहीं लेना है.
दूसरी जगह है। ये वाला तो बहुत रेयर सिम्टम्स होते हैं जब कोई एकदम हाई हीट पे पहुंच जाए। ले आते मुझे नहीं फाइट करनी अभी हुई। हाँ अभी आ रही। Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. अरे भाई साहब इसके लिए तो All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. ले जा रहा हूँ। तो सही सीधा जाते हुए राइट मुड़े जा जाते हुए ना And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? But तेरी भैंस Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. बहुत बड़ा हट्टा कट्टा है भाई। These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. जब फाइट हुई तो भाई तो यूं करके टक कर देगा तो हिस्सों में सामने से ही जाना पड़ेगा। राइट में था Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son.
If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've told you once, this is a private concern. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. Just know I care for her. It's not your concern. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Was murdered. He was. She has been laid to rest. That's all you need to know. Arey yaar. Let's see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. She died because of She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I promise to find. I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Okay. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. बेसिकली देखने में तो साइंटिस्ट ही पर्सन लगता है. I cannot enter. Would you like me to revive you? चल भी यहीं घूम रहा है. We even used to be neighbours, for Christ's sake. I prefer not to keep you. Mr. Bate. Evening, Doctor. नो रिलेशनशिप तो कुछ मार भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आजा. अच्छा मेरे को करा. अच्छी तरह एकदम करेंगे. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved.
गाइस गेम को खेल कितना रिग्रेट वाला सीन फीलिंग तो आ रही है। क्या कर रहे हो? मुझ पावर होगी ना मेरे हाथ में। ऊपर कौन है भाई? ओ भाई साहब 24 level like a boss. Bye. अच्छा नहीं था ये सीन होगा बहुत फाइट किया। चलिए ही है ब्लड मारेंगे। अच्छा ये वही डॉक्टर नहीं है वो तेरी। स्टन करना भी चाहिए। उसके सामने क्यों कर रहा हूँ ये सब? अरे भाई साहब लेवल देख रहे हो इसका? 10 लेवल है भाई। मैं आराम से फीट कर लूँगा इसे। तो भाई था अलग ही एवोल्यूशन पे बैठी है। मेरे साथ मजाक हो गया अपना। मारे यार कहाँ गया? कहाँ गया केवल इस बार नहीं आया। हेल्प कर drunk arsehole littering the How are you? I'm not your... Goodbye, young man. जो वहाँ जो मेरे साथ हुआ ना This is despicable. I have this thirst for blood. Yay, finally. Good evening, my dear colleague. You look ill. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. I'd like to see what...
been proven by many. ब्रेन वाला तो अभी तक मैंने नहीं कुछ पाया। ये बंदा पता नहीं कहाँ है। मिसिंग नहीं है भाई, ये तो अलग ही आइटम बन चुकी है अब। भाई साहब ये बंदा। Even the flu is no match for the Swanborough cordial. ये तो है इसका घर मुझे। The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. I won't end up another drunk arse wandering the streets. Not me. Gangs are ruining this neighborhood, if you ask me. इधर की साइड है वो। Back in the car! जिसको मैंने एक बार में मार दिया तो क्या चीज़ है? ओवर पावर हो एक तरीके से देखा जाए तो। It's locked. Train outside, huh? Train है, that's me. कहीं से बोलेगा, यहाँ से भी हो सकती है वो चीज़, यहाँ से भी हो सकती है और कहीं और से भी हो सकती है। I cannot enter. जो एक बार मुझे मारा नहीं, नेक्स्ट लेवल था वो। कहीं मिलेगा मुझे मिलना चाहिए। यहाँ से तो आया था दूसरी साइड पे। वो तरीका कर रहा है
ऐसा कुछ नहीं। टप्पा देते हैं, चलो इसे। अरे भाई साहब, फिलहाल पे है ना। सब कुछ चला दिया उसके बाद देता कुछ नहीं। ब्लड सैंपल, कुछ तो मिला, ब्लड सैंपल मिला। डोंट फॉरगेट। For peace of mind. Just look the other way this week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, I'm not bothered. Personal question, hide it. Have you any recent news of Nurse Crane? Nobody dares to enter the dispensary now. $5,000 कौन है जिसका 5,000 का? चल यार, तेरे को भी तेरी मेजर से ऐसे तो करके ही रहता है। पूरी किसान की करती है। वही तो करेंगे ना पर आराम से। Death is so cold. I hoped it would be more meaningful. अबे पिस्तौल देखो कौन सी वाली मिल रही है इससे। Find out about It's locked.
बेहतर होगी। ठाई 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 तो एक उधर वाले को भी लुटका ही देते हैं। तो लगे डबल तेरी बॉडी दिख रही चलिए क्या बात थी ठीक है ज़ारा की जरूरत नहीं की जरूरत तेरा भाई कितना इधर देखे ज़ारा है कोई बड़ा माल हाथ में है तो देखा जाए। ये कब मर गए बे? मैंने उस बच्चे को मारा तो सब कुछ गायब। मारा भी नहीं मर गए ये वो है newspaper has reported the fall of other load. मौसम तबीयत ठंडेदार ये होगा जब तक मैं नहीं कर पड़ूँ। मेरी गलती है, वो थोड़ा मैंने स्टेबल रखा था, उसे मार के वो और भी गंदा कर दिया मैंने सीन। स्टेशन हॉस्पिटल क्या हो गया? तेरी चला क्या हो रहा है? हेल्थ स्टेट का मतलब क्या है? मॉन्स्टर्स
अरे भाई साहब बस करो तुम करें। जाना तो बहुत मुश्किल है। क्या वे जिंदा नहीं हो सकती? बेसिकली मेन कैरेक्टर्स अपना भी मर गए ना। पता लगा इसको तो देते यार। अब गायब। इवेंट हैपन। अभी अननोन इवेंट है। यहाँ से स्टार हंटर look. Decent look. Oh yeah. I can't believe I'm doing this. सही जगह पे हम लोग गलत।
अबे यार ये नहीं हुआ कर रही है ना, ये बहुत खतरनाक हुआ वाली है। भाई बहुत हो गया। प्लीज साइड, प्लीज अहेड, साइड अहेड। यार इस साइड गया। अरे यार इसका ये भाई मरने के बाद भी भाई छोड़ा नहीं मुझे। मजा था भाई, कुछ तो दो तगड़ा माल पानी। उसको मारने के बाद इतना गंदा सीन था नहीं। वो क्या कर रहा है इतने सब यहाँ खत्म हो गए। पानी खत्म हो गए और ये भाई साहब आराम से खड़े हैं। अब एक को कहूँगा जो मैं अपना सर्च करा। मेडिकल वाउचर, मेडिकल एग्जाम। हाँ देख से मैंने और इवेंट है ना, वो पता नहीं कहाँ की इधर की साइड है। इधर का एरिया ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ फिर यहाँ पे आऊँगा। इधर का एरिया बहुत खतरनाक हो चुका है। एडमिन में ऐसे भी किसी का नहीं फीड कर सकता, गलत सीन हो जाएगा। तो इधर जाना है ना, इधर का रास्ता नहीं यही तो है।
आई. It's a leech! Kill it! Back, demon! Back! No rest for the wicked! So it's mine! Yeah! बे गलत जने पे 27 तक लेवल इसका. Over there! There's one of them grenades! Kill it! Stay back, beast! इवेंट है क्या इधर, मुझे ये देखना है. बोला गया ये नहीं मारना था क्या? निशान करे थे. All of my friends. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. भाई ये रहा. कौन है भाई? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion.
चैंपियन Why choose me? You selected me, chose me, as shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. भाई संभल गाइस की लाइक करो भाई प्लीज कर दिया भाई प्लीज किसी का कोई बात नहीं सब्सक्राइब कर दिया सब्सक्राइब भी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं सपोर्ट करने वाले सपोर्ट कर रहे हैं जाना नहीं तो जाना नहीं यस एकदम से जा रहा हूँ टाइम की यही लोग है जिन्होंने मारना है मारना ही सबसे बड़ा खतरनाक फटे भी गया पिछड़े उड़ा रही भाई साहब की कहाँ पे है वे ईट दिस बे है कहाँ कटर पटर 3 6 आजा बस हो गया नहीं था क्या यहाँ रीसेट द इवोल्यूशन इसका क्या मतलब है यही है आगे इवेंटिंग है क्या ये बात है यहाँ से पहले यहाँ जाते हैं मारते हैं इसमें आ कहाँ गया क्या नहीं रहा एलिमिनेट होके मेरा एक नीचे है नीचे वाले को पहले देते हैं आएगा नीचे वाला मैं तेरी मैं कुछ नहीं कह वो तेरी मुझे नहीं पता था ऐसे भी मार सकता है अरे भाई हम अभी कोई नहीं बचा होगा
ये नहीं करना था, एकदम से उठा था। इवेंट खत्म हो गया। पहले कहीं और इवेंट तो आखिरी साइड है। हाँ है, ये नहीं खुल रहा। नहीं, यहाँ ऊपर कहीं जाने का रास्ता है, बट नीचे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ कहीं है। क्या हो सकता है? लेकिन मुझे वन नीचे जाके देख लेना चाहिए, शायद नीचे हो। नीचे जाना चाहिए, मुझे सुन क्या है ये बंदा खड़ा है। Stop right now! देख तो मैं बहुत सुन रहा हूँ। Church, step away! ओ भाई तेरी पानी में गिर गया। It's locked. ओके, यहाँ कुछ नया जगह है, नई जगह मिली। Vampyr है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट वाला है, तो क्या कर लेगा 2000 का भी। हम हो गया इकट्ठा कर। मुझे लग रहा है कि बॉस की फाइट होने वाली है मेरे साथ, और मैं बहुत ज़्यादा पिटने वाला हूँ उसमें। अबे क्या हो गया? लग क्यों नहीं रहा? मल्ले से नहीं मरने वाला मैं ऐसे।
कुछ अलग ही जगह गई। कहाँ से कहाँ खुल रहा है भाई? जगह क्या है? Braille. Text in Braille. I need someone who can read this. ये कुछ अलग जगह खुल रही है भाई। यहाँ का रास्ता इसका मतलब ये अनलॉक हो गया। कहाँ से क्या बेसमेंट खोल रखे भाई। ये वो लोग होते हैं जो थोड़े अंडर वर्ल्ड में काम करते हैं इस टाइप ब्लैकमेल टाइप। हाँ मतलब वही समझ लो क्या कहना चाहता। वैसे मैं चीज़ तो भूल ही गया। मेरे पास 3000 है तो इसको मैं एक बार कंज्यूम कर लूँ। हेल्थ बढ़ाई जाए या कुछ और बढ़ाया जाए क्या? लेवल 3 कैसे हो गया? है ये
कॉन्स्टेंट अलाउ डैमेज बढ़ेगा, इससे भी डैमेज बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ रहा है। कवरिंग की है 2 ब्लड गेन, ठीक है भाई। क्वालिटी खत्म, पता नहीं कहाँ गया इसका। मैं क्या करूँ भाई, सब मर गए, वो बची कुची तो पहले वैम्पायर पता नहीं क्या बनी पड़ रही है। इनको कंज्यूम करना था, कंज्यूम नहीं कर पाया, इधर तो पहुँचा ही नहीं। इस वाली सिटी को बचा लूँगा। इससे क्या हो गया भाई, ये कैसे मर गई? लोग ही मरते रहेंगे तो फिर इसे फिर चालू हो गया भाई। इसका ब्रेन की बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ब्रेन की बीमारी का इलाज ही नहीं मेरे पास, क्या करूं? है मेरे पास इलाज। ये गेट कौन है? मजाक है क्या? कितना गंदा मजाक हो रहा है। अब मुझे ही झंडा पड़ रहा है। भाई खुल भी नहीं रहा, देख लो हाल, देख लो भाई, गेम ग्लिच देख लो। पड़ेगा मेरे है ना। बे यार इतनी दूर थोड़ा मजाक होता है भाई। तुमने तो भाई कभी बंदा ही खत्म कर दिया यहाँ। तेरी मैं ऐसी जब से दिमाग का रिंगर पर पड़ा कर रहा है। चल मैं अरे मिड डेयर में मेरा अटैक है, उसके बीच में हरकतें कर देता है। भाई इसका अटैक चलता ही रहा है। जब वो एक बार चालू हो गया तो हो गया, जितना मर्जी नहीं हटने वाला। डंबल का इसमें इसलिए नहीं खेलने वाला क्योंकि बेकार लगती है मुझे।
उतना फन नहीं है मेरे लिए। That's why हम नहीं खेलते Rumble Guys। वीडियो पे काम नहीं करता है, नीचे जाने के टाइम पे इनके अटैक मरने के बाद the good may vary depending on their district health situation. Okay. Last warning, sir. Stay away. क्या है? क्या है? Go back over there. There's one of them. Over there. There's one of them burning. हॉस्पिटल पहुंच जाओ, नहीं कर सकता। यहाँ का क्या सीन है बे? बस ये भी जाने ही डेड ही है बस। एक ये मरीज है, इससे पहले देते हैं। इसका दिमाग नहीं ठीक कर सकता मैं भी। Jonathan, my sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Is there anything you require? You all be loved, I spied my mother at the funeral. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No. No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Lie to those we love. What happened? But what if I was close to someone and wished to tell them the truth? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Are we then condemned to lie to those we love? We are creatures of deception, my friend.
but this is more for their sake than ours. Are we condemned to attend the funerals of all we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend, and so we are outcasts. Goodbye, my lady. Until we meet again. But the suffering continues. कहाँ कहीं है? इससे मिलने जाके God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. अरे भाई या किसी को पता नहीं लगता इसकी आंखें देख के. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. No one will notice of you. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. मुझे लगा ही था वो मर गई. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. I'll help you. मतलब ये मर गया तो हर चीज खत्म हो जाएगी. I don't have the heart of. You want to restore peace in the hospital again? Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here,
I will put an end to this. Hampton to. If you don't mind, I'd be... Meet a strange creature. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. It's hard to explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? Oh, there was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. How did the guard of Prewin come to hear of this? McCullum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. Who was that man in your office? Geoffrey McCullum, actual leader of the Guard of Prewin. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. They know I'm here now, don't they? I understand your need for blood and will not get in your way. But if you could refrain from feeding within these walls, it would go a long way to defending your case. What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Thank you, Edgar. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. एक दो तीन चार बचे हैं, दो तीन चार बचे हैं। क्या हो गया भाई? मैं क्या करूं, मेरे को वो नहीं मिल रही भाई। ब्रेन की डिसीज है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ से दे दूं? प्योर विद दिस मैं कहाँ से लाऊंगी? भाई ये मेंटल वाली स्टेट का सीन अलग है। मैं बाकी चीज़ें तो मैं क्योर करके इजी बिजी दे सकता हूँ, बट हॉस्पिटल बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये भी ज़्यादा लगेगा हाथ से।
पहले सबको ठीक करो, लेट्स गो। दवाई दो भाई सभी को, नहीं तो इसी वाली सीटी भी भाई लुढ़क जाएगी। इसको नहीं दे सकते, इसकी तो भाई मानसिक हालत खराब है, जाएगी पक्का। What on earth happened here? चल यार क्या हैपेंड हुआ होगा पता नहीं। Good evening. If you... Do you need my assistance? Don't be ridiculous. पकड़े बे। Thank you for your time. मर जाता अभी तो मेरे काम खराब हो जाता ना। It's locked, all right. मुझे आने दो, तुम्हारी कवरी लेनी है भाई। इसकी ब्रेन की डिसीज कैसे ठीक है? I cannot enter. Good evening, Mr. Goswell. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid. You are not. I have to go now. तू भी ले कहाँ गई? तेरे को भी होगी बीमारी। Good evening. ध्यान नहीं रखते बिल्कुल अपना। Do you मुझे आके देनी पड़ रही है। Well, at least. Goodbye, Mrs. Goswell. ध्यान रखा करो अपना। But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. मुझे हर जगह देखना पड़ेगा। ये ब्रेन वाली चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकता। Good evening. Do you need medical proximity? Don't take and the... Goodbye, Mr. Chidana. Never ceases to amaze me. The dead seem peaceful and lost at the same time. इससे मुझे मिल जाएगा। Good evening. Please show me. Of course. नहीं यार इसके। Tomorrow, more bodies will arrive and then sadly depart. I'm managing a train tunnel. यहाँ से पता लग गया। ब्रेन का भाई मेरे पास नहीं है, सॉरी। क्या है मैं उसका दे रहा हूँ। Good evening. Do you require? I will. No. Goodbye, nurse. यहाँ कोई नहीं इसके अलावा। भाई हार्ट ब्रेन वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ठीक है। क्या सीन चल रहा है? Sometimes you act like a real jerk, you know that? Oh, come on, Ozzy, don't be like that. What? Like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves. Did you ever even try to find me? Rescue me? You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. Look, we survived this shit together. That's all that matters. I know you did your मुझे ये best. लग रहा है। ये देख लो भाई साहब, कुछ भी चल रहा है भाई। Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. कुछ भी भाई, कुछ भी। ये बता रही। कितना बचा?
Hello again, Mr. Yes. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. यार ये नहीं हुआ. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, An irrational fear like yours. Well, Doctor, take a guess that... When I read... Jeez. Go on. You... Goodbye, Mr. Oh, ऐसी बात भी थी क्या? मेरी फेफड़े वाला. Hello again. I'm a tech. Do you need... Afraid so. Throughout history, some diseases have done more... You're working... Goodbye, Mr. Hello again. Good evening. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year. Go on. It started eating me as soon... I see. No, you don't. What... Maybe a time would... I know, Doc. Yeah. How? Luckily for us, it wasn't a... मैं कुछ और सोच रहा था but... Goodbye, Mr. Blythe. जो सोचा था वो हुआ नहीं, ये क्या बात. Your action has impacted the economy की ऐसी की तैसी हो रखी है भाई. फिर तो चलो कम से कम रिकवर कर रहा है. और इसको मैं कहाँ से लाऊं ट्रीटमेंट के लिए? डिसीज की ट्रीटमेंट बताऊँ. मरना है तो मेरे हाथ से मरो. मरना है तो मेरे हाथ से मरो ना, अपने क्यों मरो? और जब तो मुझे लग रहा है ट्रीटमेंट मिलेगी ना, सब लुढ़क जाएंगे. ट्रीटमेंट पे ऐसे मिलेगी जब बातें चलेंगी और मैं डॉक्टर के साथ रहूँ. मेन कुछ करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी हो. ये लो होगी ना अब. मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, वहाँ की कहानी करेंगे. कहाँ पे गए? Oh. Everything dies. Or should. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart.
Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Have you embraced this woman? Like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Thank you, my... जितने इसका ब्रेन दिमाग खराब हो रखा है ना, मेरे पास है भी नहीं आई किस ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है किधर? Good evening, Dr. Doctor, do you need any medical... Yes. I have no doubt about it, but you... I appreciate your... दे दी कहाँ से दी मेरे को समझ Do you नहीं need any medical assistance? Come on. Goodbye, Doctor. चलो किसी और के पास जा सकती है तो मैं दे देता हूँ। इसको दे सकते हैं तो इसे दो यार, ये बड़ी हमारी वैम्पायर। Good evening, Miss Howard. Do you require... My condition. इसकी रिक्वायरमेंट बस है नहीं। I will come and... I'll leave you. Any other? Oh, yeah. You don't mind if I search your pockets? Do Oh. you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. पैसा मिला पैसा। अरे तेरी ब्लॉन्गिस मैं दिखाता हूँ मुझे।
It's locked. Good evening. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I'm not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Can you tell me anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Miss Jones's body has gone missing? Yes. The body was brought here this morning, and now it's gone. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Please show me. Of course. Tomorrow, more bodies will arrive and then... It's locked, all right. Good evening, Doctor. Have you no more? There's no luck. Do you need my wood? ट्रीटमेंट चाहिए कहाँ से दिया ऐसे ट्रीटमेंट
कितने जाने रिकवरी के ले रहे हैं मुझे एक बार ये भी देखना. I will see you. Goodbye, Dr. Strickland. ये भी मैं सवाल कर सकता हूँ. Good evening. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Why are you blaming yourself for the death of Mr. Fiddick? It is our fault. Mr. Fiddick has stayed longer than needed here because Dr. Ackroyd and I could not agree on the correct treatment. This argument has nothing to do with his death. He was murdered. But if we had performed the surgery sooner, he would have left the hospital and avoided this fate. What is troubling you so much, Dr. Strickland? Is there something else? I had to meet face to face with the son and daughter of Mr. Fiddick this afternoon. Their eyes. I could barely stand before their accusing gaze. This difficult task is part of our job, Dr. Strickland. It's our responsibility. I know. As I also know they'll never get the answer to the question they daren't ask. They were the embodiment of cold fatalism. Can you tell? I'm sure it's my fault. Oh, nothing. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Goodbye, Doctor. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Most of the cure हो रहे हैं लेकिन मेडिसिन नहीं है मेडिसिन चाहिए के लिए रेसिपी चाहिए ऐसे भी मिल जाए तो मेडिसिन तो बना हो रहा है
ये चाहिए बे, ये नहीं है ना। मुझे बात करनी पड़ेगी समझ। Good evening. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense, now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Judging by the look in your eyes, there is something you want to ask me, Miss Howcroft. Listen to my voice, Jonathan. You can't refuse to answer my questions. Speak now. Tell me about you and that fancy red-headed lady. You mean Lady Ashbury? What about her? Don't resist me. Answer now, Doctor. What's really going on between you two? There is nothing going on at all. In fact, I barely know the woman. Now, Jonathan. I want you to forget we had this little conversation. You can get back to what you were doing. And what exactly have you learned about me? You're cold, Doctor. As cold as those steel blades you surgeons wield so nimbly. Sometimes, I wonder if you have any feelings at all. That's quite a statement, Miss Howcroft. But there is more, isn't there? Your interest for my condition. Your subtle innuendos. Are we the same, Doctor? I think one vampire in this hospital is quite enough. For once, I sense real honesty in your voice, Dr. Reed. Somehow that frightens me. Do you think about Thomas's death sometimes? Every night. I did not want to kill him. I liked him. And now those hunters want me dead. You're no murderer, trust me. Only a fool would believe otherwise. How long before other mortals start hunting me? As always, blood is the only price for blood. You're safe as long as you stay here. Those people who hunted you have learned their lesson. I can assure you. These walls will not protect me, Doctor. They will never forget the crime I've done. And nor will I. Everything that has happened to you after Thomas's death is a consequence of your I will protect illness, you. Thelma. It is time for you to open your eyes and accept your condition. You are right, Dr. Reed. I have to face what I have done. And what I am. Alas, I can't change that, can I? I am what I am. For eternity. I'll leave you. तेरा फिर भी कुछ नहीं हो सकता। तो चला गाइस, आज के लिए इतना ही। आई थिंक बहुत हो गई है। मुझे लगा नहीं था इतनी हो पाएगी। मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम में। बाय गाइस। Bye guys, let us see you in another live stream. Stream को बंद करने का टाइम आ गया।
करे तो करे कैसे मुझको नहीं पता रे। इन अनदर लाइव स्ट्रीम कभी हम वो भी खेलेंगे एपेक्स लेजेंड मोबाइल। वो कब खेलेंगे? बाय बाय गाइस।